दूसरे एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए देखेंगे तो ये 50 है, वो एक डिफरेंस उसमें है। जो दूसरी बेस्ट प्रैक्टिस है, दूसरा जो क्राइटेरिया है दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो किसी एक विशेष महत्व के मुद्दे को लेकर अपनी तरफ से कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिसके लिए उस संस्थान के को जाना जाता है, और इसके लिए भी 20 मार्क्स 20 वेटेज जो है। और तीसरा जो क्राइटेरिया का की इंडिकेटर है वो है इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस। ऐसा क्या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है जो कि हमें बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से बिल्कुल अलग करता है, हमारी एक अलग सी पहचान बताता है, इसके लिए भी 20 वेटेज है। अगर हम एफिलिएटेड कॉलेजेस का देखेंगे तो इन तीन के लिए जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 50, 30 और 20 है। और इसमें हम देख रहे हैं 7.1 के लिए 60 जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए है, 7.2 में भी 20 और 7.3 जो है उसके लिए भी 20 वेटेज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ मैट्रिसेस एंड वेटेज की अगर हम बात करें तो जो क्राइटेरिया नंबर 7 है इसके जो तीन मेन की इंडिकेटर्स हैं उनमें जो फर्स्ट इंडिकेटर है 7.1, उसमें 9 नंबर ऑफ मैट्रिसेस हैं, और इन 9 नंबर ऑफ मैट्रिसेस जो हैं उनमें से 4 जो हैं वो क्वांटिटेटिव इन नेचर हैं और 5 क्वालिटेटिव इन नेचर हैं। क्राइटेरियन का जो सेकंड की इंडिकेटर है 7.1, इसमें केवल एक ही मैट्रिक्स है और 20 वेटेज है। 7.3 जो थर्ड की इंडिकेटर है उसमें भी एक ही मैट्रिक्स है और ये भी 20 वेटेज का है। 2 और 3 जो दोनों क्राइटेरियन के की इंडिकेटर्स हैं ये क्वालिटेटिव हैं। अब हम 7.1 जो की इंडिकेटर है उसके बारे में अगर बात करें तो इट इज बेसिकली अबाउट द इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब हम इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में डिफरेंट जेंडर्स जो हैं उनके लिए क्या एक पॉलिसी है और क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जाते हैं। तो जेंडर इक्विटी प्रमोशन के लिए कोई भी अगर प्रोग्राम्स हैं, और उसी के साथ बहुत सेंसिटिव, क्योंकि आज हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंटल इश्यूज को डील करने के लिए स्टूडेंट्स तक उनकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं। एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस जो हैं जिसमें हम स्पेशली एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट रिसाइकलिंग। ये वेस्ट रिसाइकलिंग सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कार्बन न्यूट्रल अपने कैंपस को बनाने के लिए, अपने इंस्टीट्यूशन को बनाने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स हमने लिए हैं, और कैंपस के लिए ग्रीन प्रैक्टिसेस जो हैं, क्योंकि हम बात यहाँ पर कर रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज की, तो ग्रीन प्रैक्टिसेस हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी में आ जाता है कि देयर आर मेनी इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी हु आर स्पेशली एबल्ड और डिफरेंटली एबल्ड। तो क्या हमारा जो इंस्टीट्यूशन का कैंपस है वो दिव्यांग फ्रेंडली है कि नहीं, और कहाँ लोकेटेड है हमारा इंस्टीट्यूशन, उसकी सिचुएशन किस जगह पे है, और वहां पर हमें बहुत सारे एडवांटेजेस हो सकते हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उसके साथ हम किस प्रकार से डील करते हैं। और इसके बारे में मैं आगे जब बात करूंगी तो और डिटेल से चर्चा करेंगे। फिर ह्यूमन वैल्यूज और प्रोफेशनल एथिक्स जो हैं वो हम अपने इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए और किसी कार्य क्षेत्र में कौन से एथिक्स को फॉलो किया जाना है, उसके लिए क्या हमारे यहाँ कोई पॉलिसी है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, या उसके लिए कोई कार्यक्रम किए जाते हैं। और इसी के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वैल्यूज जो इंस्टीट्यूशन की हैं वो रेगुलर एक्टिविटीज में दृष्टिगोचर होती हैं या नहीं, या वो प्रैक्टिस में ली जाती हैं कि नहीं। इसका जो 7.2 वाला जो की इंडिकेटर है वो बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन की कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो कि हमने अपने आप इवॉल्व की है पिछले कई सालों में, और जिसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन की जो रेगुलर फंक्शनिंग है उसके ऊपर बहुत एक सकारात्मक सा प्रभाव पड़ रहा है। So any kind of practice which has been evolved by ourselves in the last few years and which helps in the regular functioning of the institution can be called as the best practice. Sometimes in the aspect of functioning we involve some innovation, and this practice is relevant mainly within the institution, or because we are talking about teaching
टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जब हम बेसिकली बात करते हैं तो टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो कोर्सेज हमारे यहाँ हो रहे हैं, चाहे वो डीएलएड है, बीएड है, एमएड है, स्पेशल बीएड है या इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, इन सभी में टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड, ऑफिस प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, या हम कैसे मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, या ह्यूमन बीइंग्स के साथ या फाइनेंशियल मैटर्स के साथ, हम किस प्रकार से हमने कुछ ऐसा नया इनोवेशन किया है जो कि हेल्प करता है हमारे इंस्टीट्यूशन की स्मूथ रनिंग के लिए, और इसकी वजह से जो भी पहले डिफिकल्टी आ रही थी वो डिफिकल्टी अब हट गई है उस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस वो होंगी जो हमारे इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत रेलेवेंट है। ये एकेडमिक भी हो सकती हैं, हम टीचिंग लर्निंग की बात कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं, इवैल्यूएशन की बात कर सकते हैं, इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो हैं उसके लिए भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, या स्टूडेंट्स के करियर काउंसलिंग से रिलेटेड, या स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट से रिलेटेड हम किस प्रकार से हेल्प करते हैं, ये भी बेस्ट प्रैक्टिसेस के अंतर्गत आ सकता है। तो ये एकेडमिक हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकती हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट की हो सकती हैं, जो इंस्टीट्यूशन को स्मूथ रनिंग के लिए हेल्प करती है। और 7.3 जो है दैट इज द डिस्टिंक्टिवनेस। वी आर टॉकिंग अबाउट एसएसआर ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और जिस भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को स्नैक मैनुअल में अपनी एसएसआर को भरना है तो वो कैसे बाकियों से भिन्न है, इसको उसको पोर्ट्रे करना बहुत जरूरी है। तो कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन में हो विच इज सो डिस्टिंक्ट, विच इज नॉट फाउंड इन एनी अदर काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। जैसे स्पेशली अगर हम बात करें तो अगर हम एक दो यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो एक्सक्लूसिव गर्ल्स एजुकेशन जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका एक डिस्टिंक्ट नेचर है उसमें कि स्कूल लेवल से लेकर हायर एजुकेशन लेवल से लेकर टेक्निकल एजुकेशन, इन सब में वो गर्ल्स की जो एजुकेशन है उसकी पूरी की पूरी नीड को कैटर करता है, और फुल्ली रेजिडेंशियल है। उसी के साथ साथ वहां पर हम ये भी देखते हैं कि जो महात्मा गांधी का एक सपना था कि भारत में खादी जो है वो खुद लोग बुने और खादी के वस्त्रों का उपयोग हो, तो वो भी उसकी एक डिस्टिंक्टिवनेस है। एक छोटे से उदाहरण देने के तौर पे मैं बात कर रही हूँ। तो एक ऐसा डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो उसकी सारी एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट होता हो, जो प्रैक्टिस में हो उस इंस्टीट्यूशन में, that will be caused as the distinctiveness of that particular institution. So if we go through the different matrices, so 7.1.1, that matrix is related to the energy policy streamlining ways of energy conservation and use of alternate sources of energy for meeting its power requirements. क्या इंस्टीट्यूशन ने अपनी एक एनर्जी पॉलिसी बनाई है? दिस पॉलिसी शुड बी इन द डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि उसे हमें अपलोड करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ फिर उस एनर्जी पॉलिसी में हमने अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में क्या बातें की हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल कई इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सोलर एनर्जी जो है उसको यूज कर रहे हैं, और सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन की पूरी रूफटॉप है उसमें सोलर पावर के जो इंस्टॉलेशंस जो हैं वो किए जाते हैं, एलईडी बल्ब जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कौन सी पॉलिसी है और अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, उनके बारे में न केवल हमको लिखना है बल्कि उसको हमें फिर एज ए पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है उसको हमें अपलोड भी करना है। और इसी के साथ ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर जहां जहां हम बात कर रहे हैं कि सोलर पैनल हमारे यहाँ लगाए गए हैं, जो सोलर पावर इंस्टॉलेशन जो है रूफटॉप वो अगर लगाया गया है, तो इन सबकी जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स जो हैं वो भी बहुत एसेंशियल हो जाती हैं। कॉलेज में हमारे इंस्टीट्यूशन में कहाँ कहाँ एलईडी बल्ब्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे रोका जा रहा है एनर्जी के, स्पेशली अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसके कोई भी वेस्टेज को या उसके जो ज्यादा यूजफुल नहीं है, और अगर केवल वो एनर्जी कंज्यूम अगर कर रहा है, इस तरह के अगर कोई इक्विपमेंट्स हैं तो एनर्जी पावर कंजर्वेशन को रोकने के लिए कौन कौन से उपाय जो हैं वो कॉलेज के द्वारा किए जा रहे हैं, इनकी जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स वो होना भी जरूरी है क्योंकि वो सब कुछ अपलोड करनी हो। 7.1.2 में अगर हम बात करते हैं तो इट इज बेसिकली अबाउट कि वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए क्या पॉलिसी है।
तो पहले तो पॉलिसी जो है वो इंस्टीट्यूशन की एक बिल्कुल रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, और वेस्ट मैनेजमेंट की जो पॉलिसी है उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस क्या है, एक्चुअली प्रोसेस में क्या चीज हो रही है, कौन से प्रोसीजर्स हैं, इन सबको ही डॉक्यूमेंट करना है लेस देन 500 वर्ड्स में, और उसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो भी लगाने हैं। तो अगर हमारे कॉलेज में कोई एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि जिसमें जो सॉलिड वेस्ट है उस सॉलिड वेस्ट को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है, या जो लाइब्रेरी का वेस्ट है या जो पुरानी कॉपीज जो है या किताबें हैं उनका जो वेस्ट है, तो और उसी के साथ साथ अगर कैंटीन है और कैंटीन में अगर कुछ इस तरह का सॉलिड वेस्ट जो है जो कि इकट्ठा हो जाता है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए क्या हम कुछ हॉकर्स को बुलाते हैं जो कि उसको रिसाइकल करने में मदद कर रहे हैं, या रिसाइकलिंग के लिए हमने किसी एनजीओ के साथ या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है कि वो टाइमली 6 मंथ्स में या ट्वाइस 2 मंथ में एक बार या कितनी बार वो आकर उस वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, रिसाइकलिंग के लिए ले जाएंगे। इसी तरह से लिक्विड वेस्ट, अगर हमारी कैंटीन से कुछ लिक्विड वेस्ट निकलता है और हम इस लिक्विड वेस्ट में हम जो लेबोरेटरीज में यूज हम कर रहे हैं उस वाले लिक्विड वेस्ट की भी बात कर सकते हैं। तो ये लिक्विड वेस्ट जो है इसमें भी क्या पहले सेग्रीगेशन होता है, केमिकल्स जो हैं उनको क्या अलग किया जाता है, या स्पेशली अगर हम कैंटीन के वेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें जो ग्रीस है, जो ऑयल है, क्या उसको सेग्रीगेट किया जाता है, फिर वो जो वाटर है वो जो बचा हुआ पानी है या जो वाटर है वो किस चैनल से कहाँ तक भेजा जाता है, या उसकी रिसाइकलिंग की कोई प्रोसेस है या उनके लिए कोई टैंक है। तो इसी तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट जो हम देखते हैं वो वैसे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में कम होता होगा, लेकिन फिर भी अगर होता है तो उसके लिए क्या पॉलिसी है, किसी एनजीओ के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई एमओयू साइन किया गया है, स्टूडेंट्स को वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको रोकने के लिए क्या कोई कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, जैसे कि एनएसएस और एनसीसी के स्टूडेंट्स के द्वारा कई बार होता है कि दे डिफरेंट, या अगर हमारे यहाँ कोई एनवायरमेंट क्लब है, पोल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड अगर कोई क्लब है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स का, तो किस प्रकार से जो वेस्ट है उसके मैनेजमेंट के लिए कौन सी प्रोसीजर्स जो है उनको फॉलो की जाती हैं, कौन से कैंपेन्स चलाए जाते हैं, कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, और कोई डेज स्पेशली इसके लिए सेलिब्रेट किए जाते हों, या स्टूडेंट से आइडियाज जो हैं, इनोवेटिव आइडियाज जो हैं वो लिए जाते हैं, उसके लिए कोई डिक्लेमेशन हो सकता है, एक्सटेम्पोर हो सकता है, या कोई इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के लिए कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जा सकती है जिससे कि इंस्टीट्यूशन के वेस्ट को मैनेज किया जा सके। तो इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो पॉलिसी है, जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स, ऑल दीज आर वेरी वेरी एसेंशियल। 7.1.3 जो है दैट इज बेसिकली अबाउट द सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट मटेरियल। ये जो सेग्रीगेशन है वेस्ट का, ये किस रूप से कॉलेज में किया जाता है, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए क्या अलग अलग डस्टबिन्स हैं, स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि अलग अलग ही डस्टबिन्स में वो उनको डालें, और फिर उसके बाद क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कोई जो वेस्ट कलेक्शन के लिए गाड़ी आती है जिसमें उनको डाला जाता है, इसके लिए क्या टाइम जो है वो डिसाइडेड है, उसके लिए उनके साथ क्या उनको पेमेंट किया जाता है। तो इससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं वो सब कुछ कलेक्ट होने चाहिए, वो रिटन फॉर्म में होने चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द प्रिंसिपल और द इंचार्ज हु इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फील्ड। ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए वर्मी कंपोस्टिंग जो है उसके लिए क्या कोई प्रोविजंस हैं, और बायोगैस प्लांट्स, आई हैव सीन सम इंस्टीट्यूशंस जहाँ की उन्होंने बायोगैस प्लांट्स जो हैं वो भी लगाए हैं। तो बायोगैस प्लांट जो लगाया है उसके लिए क्या पॉलिसी है, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए क्या कोई प्लांट लगाया गया है इंस्टीट्यूशन में। इनमें से सारे के सारे के इंस्टीट्यूशन में हो कोई जरूरी नहीं है, पर हमारे इंस्टीट्यूशन में इनमें से 1 है, 2 है, 3 ऑफ है, इनमें से जितने हैं उनको हम टिक मार्क करके जो हमारे लिए एप्लीकेबल है उससे रिलेटेड जो भी सपोर्ट डॉक्यूमेंट हमारे पास है वो हम उसको लगा सकते हैं, और उसके साथ जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स जो हैं वो बहुत एसेंशियल है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो किस जगह में है, कैसे वो फंक्शन करता है, उसका जियो टैग्ड फोटोग्राफ। बायोगैस प्लांट जो है वो किस जगह पर है, अगर वेस्ट को सेग्रीगेट किया जा रहा है तो वेस्ट सेग्रीगेशन का काम कौन करता है,
क्या कॉलेज में कुछ ऐसे एम्प्लॉइज हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज हैं जो कि सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट का काम करते हैं, या स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद ही वेस्ट को सेग्रीगेट करके बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है वो अलग अलग डस्टबिन में किस प्रकार से डालते हैं, और कलेक्शन के लिए, गार्बेज के कलेक्शन के लिए, वेस्ट के कलेक्शन के लिए इंस्टीट्यूशन में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या कुछ लोग हायर किए गए हैं और वो किस प्रकार से काम करते हैं। और इसी के साथ एक बात बहुत जरूरी भी ये है कि इनकम और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है, इन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, अगर वर्मी कंपोस्टिंग के लिए प्लांट लगाया है, बायोगैस के लिए प्लांट लगाया है, या सीवेज ट्रीटमेंट के लिए प्लांट लगाया है, तो इन प्लांट को लगाने में क्या एक्सपेंडिचर हुआ, और इसी के साथ साथ इनको रन करने के लिए वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या एक्सपेंडिचर हो रहा है, और ये एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ से मीट आउट किया जा रहा है, ईयरली जो एक्सपेंडिचर है वो कितना होता है, और इसके लिए पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कितना परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वो कॉलेज इसके ऊपर करेगा, उसके लिए क्या एक रूल और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में तो होगा ही, और उसी के साथ इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है उसमें भी इसको मेंशन किया जाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ वाटर मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से, वाटर कंजर्वेशन जो है वो कैसे किया जा रहा है, क्या हमारे इंस्टीट्यूशन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई जगह रूफ टॉप पे उन्होंने इस तरह से चैनल्स होते हैं या नालियां जो है उस तरीके से बनाई जाती हैं या पाइप्स डाले जाते हैं जहाँ की रेन वाटर जो है वो पूरा कलेक्ट होकर किसी टैंक में जाकर फिर वो कलेक्ट हो जाए। वेस्ट वाटर जहां से भी निकलता है, अगर वो सीवेज से अगर निकल रहा है, वो कैंटीन से निकल रहा है, वो लेबोरेटरी से निकल रहा है, वाटर टैप से जो निकल रहा है, तो वो जो वाटर है क्या उसकी रिसाइकलिंग की जाती है। इंस्टीट्यूशन की वाटर रिक्वायरमेंट्स के लिए कोई कोई रिजर्वोयर्स हैं, टैंक्स हैं, या क्या बोरवेल्स जो हैं वो वहां पर हैं इंस्टीट्यूशन में। और इसी के साथ साथ वाटर को वेस्ट होने से रोकने के लिए या वाटर के इकोनॉमिकल यूजेज के लिए क्या क्या प्रोसेस जो है, प्रोसीजर जो है वो इंस्टीट्यूशन के द्वारा फॉलो किया जाता है। These all things are very very important. It is not essential for each and every teacher education institution to have all these pro. This is a quantitative matrix, so maybe our institution could have only one or two of them or three of them. There may be some institutions who are who have all the facilities of all the four. So depending upon which all facilities are provided or are being followed in our institution, we have to highlight the income and expenditure statement according to the specific components. For example, if there is a reservoir, the reservoir is built, उस रिजर्वायर को बनाने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ, उस रिजर्वायर की टाइमली जब सफाई होती है उसका कितना एक्सपेंडिचर होता है, बोरवेल जो है तो वो बोरवेल की मेंटेनेंस के लिए या उसकी जब खुदाई हुई होगी उसमें कितना एक्सपेंडिचर लगा होगा, और वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है, उसका क्या एक्सपेंडिचर है। इन सारी चीजों को जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हमारे इंस्टीट्यूशन में फॉलो किए जाते हैं उसके लिए इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज एज वेल एज द प्रिंसिपल। और अगर हम ये क्लेम कर रहे हैं कि वी हैव वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग या वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर, तो उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे कॉलेज में जो वाटर कूलर्स हैं और उन वाटर कूलर्स से जो अगर हमने आरओ के साथ उसको अटैच किया गया है, तो हम सब जानते हैं कि आरओ में फिल्टर्ड वाटर जो है वो तो पीने के काम आता है, लेकिन बाकी बहुत सारा पानी जो है वो अलग से निकलता है, बहता है। तो ये जो पानी अलग से निकल कर फालतू बहे चले जा रहा है, क्या उसके कंजर्वेशन के लिए या वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए हमने उसको कनेक्ट कर रखा है किसी एक ऐसे टैंक से जिस टैंक से वाटर जाता है जो हमारे कॉलेज में टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम्स हैं उसके लिए, बिकॉज दैट वाटर कैन बी यूज्ड इन द टॉयलेट्स, वॉशरूम में उसको यूज किया जा सकता है, क्योंकि वो पीने के लिए अब लायक नहीं है, क्योंकि फिल्टर्ड वाटर की हम बात कर रहे हैं, आरओ की हम बात कर रहे हैं, बट इट कैन बी इजीली यूज्ड इन द वॉशरूम्स, इन द टॉयलेट्स। तो इस तरह से अगर कोई प्रोसीजर है तो उस प्रोसीजर का भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास होना चाहिए, जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स ऑब्वियसली, और उसी के साथ कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है, जैसे वेस्ट वाटर को रिसाइकल करने के लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में अगर है तो वेस्ट वाटर पहले कलेक्ट कहाँ किया जाता है, और फिर उसकी रिसाइकलिंग के लिए हमने किसके साथ एमओयू साइन किया है या किस ऑर्गेनाइजेशन को हमने हायर किया है, बिकॉज वी ऑल नो दैट सम ऑफ दीज एरियाज नीड्स एक्सपर्टाइज,
वेस्ट वाटर की रिसाइकलिंग हम सारी अपने आप कर लें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए जो एक्सपर्टाइज है वाटर डिपार्टमेंट जो है, वाटर रिसाइकलिंग का काम करने वाले कुछ एनजीओज अगर हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके साथ कोई एमओयू साइन किया है, वो हमारे यहाँ अपनी सर्विसेज जो है वो किस तरह से प्रोवाइड करते हैं। कई बार फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं या उसके लिए वो कुछ चार्ज करते हैं। तो ये वन टाइम चार्जेस क्या है, उन सबको हमको एक्सपेंडिचर जो स्टेटमेंट है उसमें दिखाना होगा। एंड ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट जियो टैग फोटोग्राफ्स आर अ मस्ट, आर एन एसेंशियल। सो एग्जैक्टली किस प्लेस पर हमारे यहाँ रिजर्वोयर या टैंक है, या वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग का जो ट्रीटमेंट है, या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रूफ टॉप पे जो नालियां बनाई गई हैं और वहां से वाटर कैसे कलेक्ट होता है, इन सब के फोटोग्राफ्स भी बहुत एसेंशियल है। 7.1.5 इज बेसिकली अबाउट पोल्यूशन फ्री हेल्दी एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं। तो व्हाट आर द डिफरेंट एफर्ट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन द क्लीनलीनेस, सैनिटेशन, ग्रीन कवर एंड पोल्यूशन फ्री हेल्दी एनवायरनमेंट? For this, for the green campus initiatives and for the cleanliness too, the different student organizations of the institutions, especially when I'm talking about NSS, NCC, Environment Club, Green Club, Red Ribbon Club, Environment Warriors, इस तरह के कई क्लब्स जो होते हैं या स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और वो भी ये जिम्मेदारी संभालते हैं कि इंस्टीट्यूशन की क्लीनलीनेस जो है उसके लिए किस प्रकार से कार्य किया जाए। सैनिटरी कंडीशंस की जब हम बात करते हैं, सैनिटेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं। और ग्रीन कवर के लिए कहाँ पर प्लांटेशन जो है वो किस किस मौके पर किया गया, और न सिर्फ प्लांटेशन किया गया बल्कि वो प्लांट्स जो हैं, वो जो ग्रास जहाँ लगाई है, प्लांट्स जहाँ लगाए हैं, उनकी उचित देखभाल किस प्रकार से हो रही है। और कहीं भी अगर ऐसा है कि जिस वजह से पोल्यूशन होता हो, अगर ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा वेस्ट जो है वो कहीं इकट्ठा हो रहा है, या कैंटीन से जो पानी निकल रहा है वो वाटर लॉगिंग किसी जगह पर हो रही है, या फिर अगर कहीं पे किसी कचरे को जलाया जा रहा है तो उसकी तरफ से धुआं तो नहीं निकल रहा है, या कॉलेज के प्रेमाइसेस के अंदर जो मतलब जो ये डीजल ड्रिवन या पेट्रोल ड्रिवन जो व्हीकल्स हैं उनका यूज जो है वो कितना होता है, और जनरेटर्स जो यूज किए जा रहे हैं वो भी जनरेटर्स ऐसे तो नहीं है कि जिनकी वजह से पोल्यूशन होता हो। तो पोल्यूशन फ्री हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए क्या, इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज भी हो सकती हैं, कैंपेन्स हो सकते हैं, वर्कशॉप्स हो सकते हैं, क्विज कॉम्पिटिशंस हो सकते हैं, रैलीज जो स्टूडेंट्स द्वारा निकाली जा रही हैं वो हो सकती हैं, कैंपस क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो सकती हैं। कैंपस क्लीनलीनेस के लिए या पोल्यूशन फ्री हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए स्टूडेंट्स का क्या रोल होना चाहिए, फैकल्टी का क्या रोल होना चाहिए, उनकी तरफ से सजेशंस जो हैं वो मांगे जा रहे हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इन सब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ्स, अगर कोई मीटिंग इससे रिलेटेड अगर हुई है, या क्लीनलीनेस एक क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के लिए एक कमेटी अगर है, तो उस कमेटी के अलग अलग मेंबर्स कौन कौन से हैं, उस कमेटी को कन्वीन कौन कर रहा है, उनके कब मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स के क्या मिनट्स हैं, क्या डिसीजन लिया गया है, और फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया है और इससे क्या प्रभाव पड़ा है। All these records need to be maintained along with the geotagged photographs. 7.1.6 is about the we are all are saying about the energy conservation as well as waste free environment. तो कैसे वेस्ट फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो सकता है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन में बाइसाइकिल्स या ई व्हीकल्स जो हैं उनको एनकरेज किया जा रहा है कि नहीं, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड्स कैंपस में हैं, कैंपस को प्लास्टिक फ्री करने के लिए कौन से इनिशिएटिव्स या प्रोसेस फॉलो की जा रही है। आजकल हम सब बात करते हैं पेपरलेस ऑफिसेस की, एक बड़ा अच्छा सा इनिशिएटिव जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, स्टेट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्पेशली लिया है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स होते थे किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड, वो सारे डॉक्यूमेंट्स या उनकी जो सीआर है और वो सारी चीजें जो बार बार पेपर्स कलेक्ट किए जाते थे, बार बार उनसे पेपर्स मांगे जाते थे, सीआर्स उनकी लिखी जाती थी, या लीव एप्लीकेशन से दूसरी सब चीज, इन सब को उन्होंने हटाकर अब पेपरलेस ऑफिस वर्क कर दिया है। तो लॉट ऑफ पेपर जो वेस्ट हो जा रहा था उसको रोका गया, और जब पेपर वेस्ट नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि पेपर पल्प से बनता है और वो जो है क्योंकि ट्रीज कटिंग से होता है, तो कैसे हम एनवायरनमेंट, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी के लिए
कॉलेजेस जो हैं वो क्या इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, तो पेपरलेस ऑफिस जो है, क्या उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स हैं, और कैंपस में ग्रीन लैंडस्केपिंग जो है ट्रीज और प्लांट्स कैसे की जा रही है, और इन सारी ग्रीन प्रैक्टिसेस जो अडॉप्ट की जा रही हैं, तो इनके वीडियोस हो सकते हैं, द स्टूडेंट्स दे आर ड्राइविंग देयर साइकिल्स, और इन केस देयर आर ई व्हीकल्स ऑन द कैंपस, पेडेस्ट्रियन रोड्स हैं जिनके ऊपर की स्टूडेंट्स और फैकल्टी जो है या दूसरे लोग चल रहे हैं। कैंपस में जहां हम देखते हैं प्लास्टिक का यूज जो है वो सबसे ज्यादा कैंपस में कहाँ होता है, जब कोई सामान आता है और वो पॉलीथीन बैग्स में आता है। कल के भी एक प्रोग्राम के बारे में बिहार का दिखा रहे थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई प्लास्टिक फ्री इंडिया की आप बात कर रहे हैं, और उसके लिए जो एक प्रोग्राम इनॉग्रेट हुआ उसमें जो फूल मालाएं लाई गई वो सारी की सारी एक वन टाइम जो यूज वाला प्लास्टिक होता है उसके अंदर थी। तो वो बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्टरी से बात थी। तो किस प्रकार से प्लास्टिक फ्री हम कर सकते हैं, तो कैंटीन में प्लास्टिक ज्यादा यूज होता है ना, तो ईचरी आइटम्स को रखने के लिए प्लास्टिक की जो प्लेट्स यूज होती हैं या पेपर की जो प्लेट्स यूज होती हैं, और पॉलीथीन्स को जो यूज किया जाता है कुछ चीजों को कैरी करने के लिए रखने के लिए, तो उनको हटाकर अब उनकी जगह क्या यूज किया जाता है, क्या स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो अपने घर से वेस्ट क्लॉथ को लाएं और उनके जो बैग्स हैं वो सिलें, या किसी एनजीओ के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं जहां पेपर बैग्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्या कैंटीन में या कॉलेज में एक एक क्रॉकरी का हम ये कह सकते हैं कि क्रॉकरी की एक यूनिट ऐसी है जहां से कि कॉलेज में अगर कहीं भी कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वहां से क्रॉकरी जो है, स्टील क्रॉकरी स्पेशली हम बात करें, दूसरी तरह की क्रॉकरी, उसको लिया जा सके और फिर वापस से डिपॉजिट किया जा सके, ताकि वन टाइम यूज वाला जो प्लास्टिक है उन सब का जो इस्तेमाल है वो रोका जा सके। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि अब इनमें से कितना हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले रहा है ये डिपेंड करता है डिफरेंट टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। तो वी हैव एज एन इंस्टीट्यूशन वी हैव टू इंडिकेट वेदर वन और टू और एनी थ्री ऑफ देम या ऑल फाइव ऑफ देम आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन आवर इंस्टीट्यूशन, and we have to upload the videos as well as geotagged photographs, and sometimes it is very essential uh, to distribute और to सर्कुलर जो जारी होने की जो बात होती है कि क्या चीजें इस्तेमाल में लाई जाएं और क्या चीजें इस्तेमाल में नहीं लाई जाएं। जैसे महाविद्यालय के अंदर जो प्लास्टिक है वो किसी भी रूप में लाया जाना जो है वो रूल के अकॉर्डिंग नहीं है, और अगर प्लास्टिक पाया गया तो इसके लिए कोई जुर्माना लगाया जाएगा या उसको उसके लिए रिमाइंड किया जाएगा या उसको बिल्कुल रोका जाएगा। इसके लिए अगर कुछ सर्कुलर समय समय पर निकाले जाते हैं या कोई पॉलिसी बनाई गई है कि जिसमें बाइसाइकिल्स को एनकरेज करने के लिए, पेपरलेस ऑफिस के लिए या ग्रीन कैंपस के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। वन मोर थिंग, व्हेन वी आर सेइंग अबाउट पेपरलेस ऑफिस, तो पेपरलेस ऑफिस के लिए कुछ स्पेसिफिक से सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो होंगे और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी हो सकते हैं जिसको कि हमें अपलोड करना पड़ेगा अगर हम क्लेम कर रहे हैं कि वी आर टेकिंग द इनिशिएटिव ऑफ मूविंग टुवर्ड्स अ पेपरलेस ऑफिस। So we need to upload the documents related to the software packages being used by our institution as well as the snapshots, how it is being used, कैसे वो यूज हो रहा है, और इसके लिए भी इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है वो बहुत एसेंशियल है। बिकॉज डेवलपमेंट अगर हम बात कर रहे हैं पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली रोड्स का, तो वो जो कैंपस में बनाई गई है उसमें क्या एक्सपेंडिचर लगा है, प्लास्टिक फ्री हम करना चाहते हैं तो प्लास्टिक की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं और उसके लिए कितना एक्सपेंडिचर लगता है, कोई सॉफ्टवेयर पैकेज अगर हमने परचेज किया है या अगर हमने स्पेशली लोगों को हायर किया है जो पेपरलेस ऑफिस की तरफ जाने के लिए ट्रेन कर सकें हमारे जो एकेडमिक स्टाफ है या क्लरिकल स्टाफ है उसको, उसमें क्या एक्सपेंडिचर है, और लैंडस्केपिंग के लिए अगर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं उनकी मेंटेनेंस है तो उसके लिए, या अगर कॉलेज में स्पेशली हमने कोई माली लगा रखा है या कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा इनकी देखभाल करते हैं तो उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके सारे स्टेटमेंट वो भी बहुत आवश्यक रूप से हमारे पास होने चाहिए क्योंकि इन्हें अपलोड भी करना है। और फिर उसके बाद है कि ग्रीन इनिशिएटिव और इन सब के लिए इसे 7.1.7 में स्पेशली पूरा जो एक्सपेंडिचर लास्ट 5 इयर्स में आपने किया है उन सबको आपको बताना पड़ेगा, फिर उसके लिए परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा कि ग्रीन इनिशिएटिव के लिए या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंस्टीट्यूशन ने कितना एक्सपेंडिचर किया है, और इसमें से जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो सैलरी कंपोनेंट है उस सैलरी कंपोनेंट को बिल्कुल हटा देना पड़ेगा, और बाकी इनिशिएटिव्स के लिए हमने पेड़ लगाए हैं, हमने जो बोरिंग अगर है वो है, सोलर पैनल्स की अगर हम बात कर रहे हैं वो है,
तो इन सब के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, सैलरी कंपोनेंट को हटाकर कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस एक्सपेंडिचर को लास्ट 5 ईयर्स को इस पूरा स्टेटमेंट में दिखाना है। और फिर ये परसेंटेज जो है उसको निकालने का फॉर्मूला ये है कि ग्रीन इनिशिएटिव, वेस्ट मैनेजमेंट में जो पैसा खर्च हो रहा है और बाकी पूरा का पूरा कितना एक्सपेंडिचर है, लेकिन इसमें सैलरी कंपोनेंट को नहीं केवल इस्तेमाल करना है, और 100 से मल्टीप्लाई करके फिर इसके लिए एक पूरा का पूरा हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा कि कितना परसेंटेज जो है वो कॉलेज में हम एक्सपेंडिचर करते हैं इन ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। और ये जो डाटा टेम्पलेट दिया हुआ है इसी में इसको भरना है, और इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट जो है ये भी जो है इसको पूरा का पूरा अपलोड करना है। 7.1.8 जो है इट इज बेसिकली अबाउट leveraging the local environment, locational knowledge and resources, community practices and challenges. Every institution is located or situated at a particular place. जिस स्थान पर वो है उस स्थान की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ का नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, कल्चरल एंड सोशल एनवायरनमेंट, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उस कम्युनिटी में क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, और उस स्थान पे अगर हमारा कॉलेज सिचुएटेड है तो क्या चैलेंजेस हमारे सामने आती हैं, उन सब चैलेंजेस को दूर करने के लिए क्या एफर्ट इंस्टीट्यूशन जो है वो कर रहा है। ओके, जैसे कि हम मान एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत दूर है शहर से वो दूर है, लेकिन वो कुछ गांवों के पास है, या वो उसके आसपास कोई एक ऐसा एरिया है जो कि स्लम्स का एरिया है ना, और उसके अलावा लैंड जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन कम्यूट करने में बच्चों को उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इन सब के लिए क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं? हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि स्टूडेंट्स इतनी दूर तक हमेशा कम्यूट नहीं कर सकते आराम से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज ठीक नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं है तो क्या हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, या ऑन कैंपस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाया जाता है, और उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑन कैंपस रह सकें, जिससे कि जो एक लोकेशनल डिसएडवांटेज है उस चैलेंज से हम दूर रह सकें। फिर अगर हम बात करते हैं कम्युनिटी प्रैक्टिस की, तो अगर हमारे आसपास की कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं जो कि इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क में, तो उनको हम कैसे और ज्यादा स्किल्ड कर सकते हैं। और अगर आसपास कोई एरियाज ऐसे हैं जहां पर कि टीचर्स अवेलेबल नहीं हैं, सैनिटरी और हेल्थ की कंडीशंस अवेलेबल नहीं है, एनवायरनमेंट के बारे में, हेल्थ और सैनिटेशन के बारे में अगर लोग नहीं जानते हैं, तो उसके बारे में उनको कैसे अवेयर किया जा सकता है। कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे जाकर वो आसपास का जो एरिया है, स्लम्स हैं या विलेजेस हैं, वहाँ लोगों में हेल्थ के प्रति, एजुकेशन के प्रति, क्लाइमेट चेंज के प्रति अवेयरनेस को और ज्यादा फैला सकते हैं और उनकी मदद कर सकते हैं उन्हीं का जो एनवायरनमेंट है उसको और ज्यादा क्लीन करने के लिए और दूसरे प्रकार से। तो इस प्रकार से कम्युनिटी प्रैक्टिसेस क्या हैं और चैलेंजेस हमारे सामने क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंस्टीट्यूशन एक ऐसी जगह है जिसके आसपास बहुत सारे आर्टिसंस रहते हैं, तो वो आर्टिसंस अगर वहां पर हैं या स्किल्ड पर्संस हैं या आसपास कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है या फैक्ट्री है, तो वहां से हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को वहां की विजिट के लिए ले जा सकते हैं, वहां से हम रिसोर्स पर्सन जो हैं उनको इन्वाइट कर सकते हैं, हम स्किल्ड आर्टिसंस जो हैं उनको इन्वाइट कर सकते हैं कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिफरेंट स्किल्स के बारे में और ज्यादा जानकारी भी दें और उनके जो स्किल जो है उसको अपलिफ्टमेंट पे काम करिए। तो बोथ वेज कहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन लोकेटेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उस कम्युनिटी के लिए, उस एनवायरनमेंट के लिए। हमें उनकी नॉलेज और रिसोर्सेस को भी यूज करना है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, और हमारे इंस्टीट्यूशन के पास जो एक्सपर्टाइज है उसको भी हमें इस्तेमाल करना है, ताकि हम उस कम्युनिटी को, कुछ कहते हैं ना, देयर इज अ टर्म गिविंग बैक टू द कम्युनिटी और फीलिंग इन्वेस्टेड इन द कम्युनिटी, वेदर वी आर डूइंग समथिंग फॉर द कम्युनिटी और नॉट। तो अगर कम्युनिटी ऐसी है कि जहां उनके पास पीने के पानी की अगर सुविधा नहीं है और हमारे पास अगर एक बहुत बड़ा ओवरहेड टैंक है, तो उसके लिए हम उस आसपास के एरिया में क्या कुछ लोगों को भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। और उसी के साथ साथ कि अगर उनके पास लाइब्रेरी फैसिलिटीज नहीं है, रीडिंग रूम्स नहीं है,
तो क्या हम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी जो है वो इवनिंग के कुछ आवर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए या रीडिंग फैसिलिटीज के लिए लोकल कम्युनिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं? अगर कम्युनिटी अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो उस कम्युनिटी अवेयरनेस, चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, वो सैनिटेशन के बारे में हो, वो बैलेंस डाइट के बारे में हो, वो हेल्दी फूड स्टाइल्स के बारे में हो, या एज एन एंटरप्रेन्योर्स वो कितना काम कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हो, तो उसमें कैसे हेल्प कर सकता है हमारा इंस्टीट्यूशन, और इसके लिए हम क्या-क्या काम कर रहे हैं। कोई कैंपेन हमने चलाया है, हमने उनको अपने यहाँ इनवाइट किया है, जो स्किल्ड पर्सन्स या लोकल आर्टिसंस हैं या रिसोर्स पर्सन्स हैं कम्युनिटी में से, उन लोगों की जो टॉक्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं या जो वर्कशॉप्स और प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को स्किल सिखा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्या हमने कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाया है, हमने उनको कौन से सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं, स्टूडेंट्स के साथ जो उनकी फोटोग्राफ्स हैं, जो चीजें उन्होंने बनाई हैं उनको डिस्प्ले के लिए, या उस एरिया में अगर लोग कुछ ऐसा प्रोड्यूस करते हैं जिसको ज्यादा कम्युनिटी के सामने डिस्प्ले किए जाने की आवश्यकता है, तो इसके लिए भी हम उनको रिसोर्सेज और फील्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, NIFT शिलोंग का जो कैंपस है, आई हैव बीन देयर बिकॉज माय सन स्टडीज देयर। तो वो लोग एक फेयर लगाते हैं जिसमें आसपास के विलेजेस से के जो लोग होते हैं वो अपने जो हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं उन सबको लेकर आते हैं। तो क्योंकि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स वो सब लोग बनाते हैं, और उसके लिए कई बार एक अच्छा सा मार्केट अगर उनको नहीं मिल पा रहा है, तो NIFT शिलोंग इज अ वेरी ह्यूज कैंपस, तो वहाँ उनको साल में एक बार उनके लिए पूरा का पूरा एग्जीबिशन जैसा जो है वो लगाने के लिए उनको स्पेस दिया जाता है, और बाकी जो मॉनिटरी हेल्प है वो भी दी जाती है, लॉजिस्टिक हेल्प भी दी जाती है, और पूरे शिलोंग के जो लोग हैं या नेबरिंग प्लेसेस के जो लोग हैं वो वहाँ आते हैं, उनके एग्जिबिट्स को देखते हैं और परचेज करते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हम लोकल एनवायरनमेंट और लोकेशनल नॉलेज और रिसोर्सेज जो हैं, जो कम्युनिटी प्रैक्टिसेस हैं, उनका भी यूज कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, और हमारा जो एक्सपर्टाइज है उसको यूज कर रहे हैं हम कम्युनिटी के एडवांटेज के लिए, बोथ वेज। तो इसके लिए जो भी सपोर्ट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे भी अपलोड करने होंगे, एंड जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स एज ए मस्ट, वो तो मैंने आपसे कहा ही है। 7.1.9 जो है, इट इज बेसिकली अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट। क्या इंस्टीट्यूशन ने कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है स्टूडेंट्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए और दूसरे तरह के स्टाफ के लिए? और ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ये पूरा रिटन फॉर्म में है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो हमारे इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट से भी लिंक्ड है। वेबसाइट में ये डिस्प्ले होता है, और न सिर्फ ये वेबसाइट में डिस्प्ले होता है बल्कि जब भी नए रिक्रूटमेंट्स होते हैं स्टाफ के, और नए स्टूडेंट्स जो एडमिशन जब होता है हर साल, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस इंस्टीट्यूशन में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और क्या कोड ऑफ कंडक्ट है। फिर एक इसके लिए कमिटी है कि नहीं, उस कमिटी को कोई एक कन्वीनर होगा, उसमें कुछ मेंबर्स होंगे, और वो कमिटी मॉनिटर करेगी कि ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो फॉलो किया जाता है कि नहीं। जैसे आपने कई इंस्टीट्यूशंस में देखा होगा कि प्रोक्टोरियल बोर्ड होता है, जैसे कि हमारा एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है जिसमें 5 फैकल्टीज हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इज वन अमंग देम। तो एक प्रोक्टोरियल बोर्ड है जिसमें सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं और एक चीफ प्रॉक्टर भी है। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जाम में मोबाइल लेकर नहीं जा सकते हैं, स्टूडेंट्स जब कॉलेज में एंटर करते हैं तो उनके पास आई कार्ड होना चाहिए। हमारे कॉलेज में तो नहीं है, लेकिन कई कॉलेजेस में ड्रेस कोड भी होता है, तो वो ड्रेस कोड जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। आप किस जगह पर जा रहे हैं तो आपको साइलेंटली जाना है, क्लासरूम जब आप स्विच कर रहे हैं एक क्लास से दूसरी जगह तक आप जा रहे हैं तो क्या करना है, लाइब्रेरी में आपको कैसे करना है, एग्जामिनेशन हॉल में आपका कोड ऑफ कंडक्ट कैसा होना चाहिए, टीचर्स के साथ आप बिहेव करते हैं तो कैसा होना चाहिए, मीटिंग्स जब ऑर्गेनाइज की जाती हैं तो उन मीटिंग्स का भी क्या किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। तो इसी तरह से पूरा का पूरा डिटेल्ड कोड ऑफ कंडक्ट, एंड कोड ऑफ कंडक्ट फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड अदर जो स्टाफ है, उन सब के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट है। कई बार कोड ऑफ कंडक्ट हमारी एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी जो होती है जिससे हम एफिलिएटेड हैं, उनका भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उस कोड ऑफ कंडक्ट को भी हम फॉलो कर सकते हैं और अपना इंस्टीट्यूशन का एक अलग से प्लीज म्यूट नीतू की आगे, प्लीज म्यूट। और वेब लिंक जो है वो इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट में होना चाहिए ताकि जो भी हमारी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट को
ओपन करे या उसको विजिट करे तो कोड ऑफ कंडक्ट भी वो देखे। कोड ऑफ कंडक्ट को एडहेयर करने के लिए जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे मैंने कहा ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स भी होने चाहिए जो नए टीचर्स हैं उनके लिए, इस चीज को भी ध्यान में दिया जाना है। तो वो जो है कोड ऑफ कंडक्ट जो है उनको भी पूरा बताया जा रहा है, तो उसके लिए कौन सी पीरियोडिक प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और हम समय समय पर अप्रेजल भी करेंगे कि कोड ऑफ कंडक्ट इज बीइंग फॉलोड और नॉट। मॉनिटरिंग कमेटी क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स के अगर कोई प्रोग्राम्स जो हैं वो बीच बीच में वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स जो हैं जो कि वैल्यू से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल एथिक्स से रिलेटेड हो, उनको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इन सबसे रिलेटेड डिटेल्स, minutes of the meetings, the decision of the meetings, various circulars, all these need to be उनको अच्छे से न सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करना है बल्कि उसके साथ साथ उनको हमें अपलोड भी करना होगा। और प्रोफेशनल एथिक्स के प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए या अदर स्टाफ के लिए पीरियडिकली ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, कि मंथ में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, 6 मंथ्स में ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, क्या उन प्रोग्राम्स का एक थीम है, क्या हम उसके लिए कुछ रिसोर्स पर्सन्स को बाहर से बुला रहे हैं, या कॉलेज के ही जो सीनियर मेंबर्स हैं वो ये कोड ऑफ कंडक्ट स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को जो क्वेरीज हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा रहा है। और अगर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं किया जा रहा है किसी टीचर के द्वारा या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा या स्टूडेंट्स के द्वारा, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कहाँ वो अपनी कंप्लेंट लिखा सकते हैं, और कहाँ अगर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या एक्शंस लिया जा रहा है उन लोगों के लिए, ये सारी चीजें भी जो है इनके डॉक्यूमेंट्स, ये सब कुछ इसमें होना चाहिए। और जो मीटिंग्स हैं उनके जियो टैग फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट में तो कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो पूरा का पूरा अवेलेबल होगा, तो हम इंस्टीट्यूशन की जो वेबसाइट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म पे। कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो कमिटी है, कमिटी की मीटिंग्स हैं, उनको भी अपलोड किया जा सकता है। देन द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज 7.2.1, इसका वेटेज 20 मार्क्स मैंने आपको कहा था, और क्वालिटेटिव है ये। तो 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको हमें इसमें बताना है, और इसके लिए एक अलग से फॉर्मेट है, और इन बेस्ट प्रैक्टिसेस से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, जो प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है, जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जा रहा है, और उसके अलावा जो जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स की कैसे वो प्रैक्टिस फॉलो की जा रही है, इससे रिलेटेड अपलोड करने होंगे। और इसके लिए नैक ने एक स्पेशल सा फॉर्मेट दिया है कि किस प्रकार से इसको लिखना है, कैसे आपको इसको मेंशन करना है एसएसआर में। इसमें हम देखेंगे कि जो फॉर्मेट नैक ने दिया है, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए सबसे पहले तो टाइटल ऑफ द प्रैक्टिस होना चाहिए कि क्या टाइटल है आप जो बेस्ट प्रैक्टिस आप फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट सपोर्ट और कैंपस प्लेसमेंट जो है या इंटर्नशिप प्रोग्राम्स जो है, इंटर्नशिप सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है, ये उसकी बेस्ट प्रैक्टिस है। तो उसको जो इसके कीवर्ड्स हैं, इसमें कीवर्ड्स क्या हुआ, प्लेसमेंट ड्राइव, स्टूडेंट सपोर्ट फॉर इंटर्नशिप, ये जो है कीवर्ड्स, इसको हम टाइटल ऑफ द प्रैक्टिस में लिखना है। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में बेसिकली क्या आउटकम आप चाह रहे हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है दिस प्रैक्टिस का, आप ये प्रैक्टिस जो है जो कर रहे हैं तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उसको आप डिटेल में लिखें, और फिर किस कॉन्टेक्स्ट में है। कोई चैलेंजिंग इशू हो सकता है, पहले आपको उसी को एड्रेस करने के लिए तो आप ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्या होंगी। We have been running an institution for a long time, and we as teacher educators sometimes feel that these are the particular fields or the aspects in which we are lagging behind. And if we feel like that, so then we should find something कि हम उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए कुछ कर सकें, और फिर हम जब उसको फॉलो कर रहे हैं तो इससे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है, तो ये हमारे इंस्टीट्यूशन की बेस्ट प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि लास्ट 2 सेशंस की अगर हम बात करें, स्पेशली पेंडेमिक के टाइम पे, तो स्टूडेंट्स जो बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पूरे के पूरे प्रोग्राम में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है माइक्रो टीचिंग का, और दूसरा होता है प्रैक्टिसिंग इन द स्कूल्स, चाहे वो इंटर्नशिप की हो या प्री इंटर्नशिप की हो, जो कि किसी स्कूल में होती है 10 डेज के लिए। क्योंकि पैंडेमिक में स्कूल्स वर नॉट ओपन, तो दिस वाज नॉट पॉसिबल, इवन द कॉलेजेस वर नॉट ओपन,
तो फिर माइक्रो टीचिंग जो है, माइक्रो टीचिंग के लिए भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन उनके लिए जो क्लासेस आयोजित की गई और स्टूडेंट्स को अपने माइक्रो टीचिंग के छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियोस बनाकर भेजने थे और उस पर उनको फीडबैक दिया गया। इसी तरह से स्कूल में उनकी प्रैक्टिस टीचिंग नहीं हो सकती है वो पढ़ाने के लिए, तो कैसे कुछ स्कूल्स के साथ कोलैबोरेट किया गया और उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस दी। सेम वे इंटर्नशिप के लिए, अगर गांव में बच्चों ने कहा हम सब गांव में हैं मैम एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड अ स्कूल, क्योंकि स्कूल भी बंद हैं, तो हमने स्टूडेंट से कहा कि क्या ऐसा कुछ है कि आप वो फॉलो कर सकते हैं, आपके आसपास जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ आसपास कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और क्या उन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप उनको दूर दूर बैठाकर दूर से ही उनके साथ बातचीत कर सकें। तो एक ऐसा टाइम पेंडेमिक में जिसमें कि स्टूडेंट स्कूल नहीं जा रहे थे, सबके पास ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के लिए स्पेशली हम हिल्स की अगर हम बात करते हैं तो नेटवर्क भी नहीं है, और जिस प्रकार के सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स थे सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं था, लेकिन उनकी स्टडीज जो है वो रेगुलर रहे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप प्रोग्राम में 7-7, 8-8 स्टूडेंट्स जो है किसी पर्टिकुलर एरिया से लेकर अपने गांव में जिस प्रकार से उनके साथ टीचिंग की, और उसको भी हमने इंक्लूड किया है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस जो है, इसको अगर हम कुछ टाइम अगर फॉलो कर रहे हैं तो दिस कैन बी कॉल्ड एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। तो क्या अंडरलाइन प्रिंसिपल था? अंडरलाइन प्रिंसिपल इसमें ये था कि जो पेंडेमिक की सिचुएशन में इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑनलाइन क्लासेस जो है वो सब जगह पॉसिबल हो, तो उसके लिए फिर ये कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या चैलेंजिंग इशू था, फिर आपने डिजाइन कैसे किया कि आप इस प्रैक्टिस में करेंगे, इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, फिर उस प्रैक्टिस की यूनिकनेस क्या है, वो प्रैक्टिस फॉलो करने में क्या कंस्ट्रेंट्स थे, क्या लिमिटेशंस थी। तो कंस्ट्रेंट ये था कि किसी भी स्कूल का प्रिंसिपल जो है, गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल, उसका कहना था कि मैं स्टूडेंट्स को टीचिंग इंटर्नशिप के लिए सिग्नेचर नहीं कर सकता, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं इनको हम मॉनिटर नहीं कर सकते। तो ये कंस्ट्रेंट्स हमारे पास आए, ये लिमिटेशंस हमारे सामने आई। तो उसमें फिर कैसे प्रैक्टिस फॉलो की गई, इसके ऊपर पूरा डिटेल राइटिंग। फिर इसी के साथ साथ एविडेंस ऑफ सक्सेस, यानी जो परफॉर्मेंस स्टूडेंट्स की हुई या जो भी हमने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो की, उसका हमने रिव्यू किया, उसके क्या रिजल्ट निकले, ये रिजल्ट्स हमको क्या बताते हैं, और ये रिजल्ट्स कई बार हमारा फेलियर भी बता सकते हैं, कई बार ये हमारी सक्सेस भी बता सकते हैं। तो उसमें सक्सेस जो है, कितनी चीजें जो हैं जिसमें हम सक्सेसफुल हुए, दे आर गोइंग टू मेक अ चेंज इन द वे आवर इंस्टीट्यूशन इज फंक्शनिंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड। ओके, और जो चैलेंजेस हैं जो उसमें जो हम नहीं कर पाए, जिसमें हम सक्सेसफुल नहीं है, वो तो हमारी कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस हो गए। कौन सी प्रॉब्लम्स एनकाउंटर की हैं और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं उस बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करने के लिए, और उसको अडॉप्ट करने में, इम्प्लीमेंट करने में इंस्टीट्यूशन ने क्या क्या किया है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। ये पूरा बेस्ट प्रैक्टिस जो है, इट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट वी कैन से, इन विच वी हैव टू राइट इन द एसएसआर अबाउट द 2 बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलोड। ओके, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो फॉलो की जा रही हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो है वो जेंडर इक्विटी को लेकर या जेंडर इक्वालिटी को लेकर अगर काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर काम कर रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन जो है उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि वी आर ट्राइंग टू make the students aware about the society in which there are different kind of children and all do not have the same kind of capacities, to how to deal with the children who are divyang, especially abled जो हैं, उन चिल्ड्रन के साथ कैसे डील करना है, उनके लिए कुछ स्पेसिफिक से उनके हॉस्टल्स हैं, उनके जैसे देहरादून में ऐसे 2 हैं, राफेल होम एंड चेशायर होम, जहाँ अंडर प्रिविलेज्ड जो चिल्ड्रन हैं या स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन जो हैं, स्पेशल चिल्ड्रन वो रहते हैं, तो उनकी स्टडीज से रिलेटेड जो काम है, उनके साथ कोई एमओयू साइन किया है उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनकी जो डेली रूटीन में उनको हेल्प करने के लिए, उनको कोई स्किल को सिखाने के लिए, या उनको इंक्लूसिव एजुकेशन में कैसे हम एड ऑन करने के लिए कोई प्रैक्टिस अगर फॉलो कर रहे हैं, या हम इवैल्यूएशन सिस्टम की बात कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इवैल्यूएशन है वो टाइमली इवैल्यूएशन होता है, पीयर इवैल्यूएशन भी होता है, मेंटर इवैल्यूएशन भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी हो रहा है, उसको कोई स्पेशल से प्रैक्टिस हम फॉलो कर रहे हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूशन की स्मूथ रनिंग में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। ओके, तो इस प्रकार की बेस्ट एनी 2 प्रैक्टिसेस जिनके बारे में इतना डिटेल में लिखना है, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो नैक में दिया गया है। और 7.3.1 जो है, that is performances of the institution in one area which is very distinct. Every institution has its vision, its mission, it is working for a particular field, वो उसकी प्रायोरिटी है या वो उसकी स्ट्रेंथ है, तो उस एरिया ऑफ डिस्टिंक्टिवनेस के बारे में
पूरा डिटेल में इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस जो है वो उस डिस्टिंक्टिव एरिया में कैसी है, और इससे रिलेटेड फोटोज, वीडियोज और कैसे इंस्टीट्यूट परफॉर्म कर रहा है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में, जियो टैग फोटोग्राफ्स भी, वीडियोज भी, जो एक पॉलिसी अगर बनाई गई है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसको भी किया जा सकता है। तो इसके लिए आप अगर मौका लगे तो आप लोग डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो स्पेशली अगर हम जो A++ और A+ जिनको ग्रेड मिला है, उनके इंस्टीट्यूशन की बेस्ट प्रैक्टिसेस को या डिस्टिंक्टिव एरियाज को अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमको और ज्यादा जानकारी मिलेगी और हमें मदद मिलेगी कि किस प्रकार हम, हमारे इंस्टीट्यूशन की क्या डिस्टिंक्टिवनेस है। जैसे कि आई बिलोंग टू अ कंस्टिट्यूएंट कॉलेज, तो मुझे अपने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में सबसे डिस्टिंक्टिवनेस जो लगती है वो ये कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है, इट इज नॉट अ स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन एंड समवेयर एंड समहाउ वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द होल कॉलेज। और स्पेशली हम अगर बात करें कि कोई एक ऐसी यूनिवर्सिटी है या कोई एक ऐसा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है जो कि एक बड़े मैनेजमेंट का पार्ट है, जिस मैनेजमेंट के प्राइमरी स्कूल भी हैं, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, बीएड कॉलेज भी हैं, और उसी तरीके से स्पेशल एजुकेशन के प्रोग्राम्स भी अगर चलाए जाते हैं, तो उनके लिए डिस्टिंक्टिवनेस क्या होगी कि एक तरह से वो पूरी की पूरी एंटिटी है। उनके जो स्टूडेंट्स बीएड का प्रोग्राम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिसिंग स्कूल जो है वो उनके सामने उपलब्ध है। जो स्कूल के जो मेंटर्स होते हैं, उनके जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं कि कहाँ गैप रह जाता है टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसिंग स्कूल्स के बीच में, स्पेशली स्कूल एजुकेशन के लिए किस प्रकार से टीचर्स के रिक्वायरमेंट है, स्टूडेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, तो उन गैप्स को फिल करने के लिए ये पूरी एंटिटी जो है वो उनको ज्यादा मदद करती है, क्योंकि ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन हो सकता है, तो वो डिस्टिंक्टिवनेस हो सकती है उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की। मैं यूं ही नाम लूंगी कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो उसका जो एक मैनेजमेंट है, जैसे कि हमने मान लिया कि एक कोई मैनेजमेंट है, डीएवी मैनेजमेंट, उस डीएवी मैनेजमेंट के स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, प्राइमरी के भी हैं, स्पेशल एजुकेशन के भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वीमेन एजुकेशन पे भी वो काम कर रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी वो काम कर रहा है, तो एक डिस्टिंक्टनेस उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की है, और यही उसका विजन भी है कि सबको साथ लेकर चलना और सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य करना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी है, वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डिस्टिंक्टिवनेस है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग हो सकती है ना। कई जगह जो होते हैं बहुत ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली, हम अगर विश्व भारती और शांति निकेतन अगर उनकी बात करते हैं, तो एक नेचुरलिस्टिक फिलोसफी को फॉलो करते हुए नेचुरल एनवायरमेंट में जो वहाँ एजुकेशन दी जाती है, एंड स्पेशली कल्चरली रूटेडनेस की हम बात करते हैं, है ना, कि वहाँ कला को, संस्कृति को, भाषाओं को बहुत महत्व दिया जाता है, तो वो उसका एक डिस्टिंक्ट नेचर है। उस डिस्टिंक्टिवनेस को आप कैसे करोगे? मैं अपने इंस्टीट्यूशन की अगर बात करती हूँ तो वो 100 साल से भी पुराना इंस्टीट्यूशन है। बीएड वहाँ पे 1951 से स्टार्ट हुआ था, तो एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन जिसकी एक बहुत बड़ी लीगेसी है, वो कंस्टिट्यूएंट है, उसमें बहुत डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो कैसे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हम होकर कार्य कर रहे हैं, ये इसकी एक डिस्टिंक्टिवनेस हो सकती है। तो हर इंस्टीट्यूशन को खोजना पड़ेगा कि मेरी परफॉर्मेंस के एरिया में सबसे डिस्टिंक्ट क्या है जो मुझे दूसरों से अलग बनाता है, मेरा अलग और मेरा अनोखापन, मेरा विशिष्टपन एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, उसको हाईलाइट करते हुए और उसको हाईलाइट करते हुए इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस जो है वो कैसे बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, उसको हाईलाइट करते हुए हमें बताना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट मैट्रिसेस ऑफ क्राइटेरिया नंबर 7। थोड़ा सा मैं जल्दी में इसलिए बोला क्योंकि आज बहुत सारा वैलिडिटी प्रोग्राम्स में देयर आर मेनी स्पेशल गेस्ट्स लाइंड अप, सो आई होप आई एम एबल टू summarize the whole criteria 7 in a concise manner. Thank you from my side, and in case there are any questions. Thank you very much, ma'am. It was a very nice presentation as well as a very important aspects as well as a very informative session. And definitely for the NAAC assessment process, all the colleges will have very helpful your presentation. Thank you once again. Thank you. A request to the participants, is there any questions? Good morning, ma'am. Yes.
Okay, I could see a question about green audit, sir, and how it can be conducted. Actually, the three kinds of audited are conducted, especially when we are talking about, one is academic audit, another one is energy audit, another one is green audit. Audit basically क्या है कि हमने क्या एक प्लान बनाया है, उस प्लान के लिए हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है, और वो एक्सपेंडिचर जो है वो जिन चीजों में किया है वो दिख रही है कि नहीं. तो ग्रीन ऑडिट बेसिकली ये है कि अगर अपने कैंपस को अपने एनवायरमेंटली फ्रेंडली बनाने के लिए या ग्रीन कैंपस बनाने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव के लिए क्या आपने एक्सपेंडिचर किया है, और वो एक्सपेंडिचर किस किस में किया है ना. आपने बीज खरीदे हैं, आपने मिट्टी खरीदी है, आपने पेड़ पौधे खरीदे हैं, आपने वर्कफोर्स जो है उसको लगाया है, और उसकी वजह से फिर उस पूरे एरिया में कितना ग्रीनरी है, और उस ग्रीनरी के वजह से आप पोल्यूशन जो है उसका लेवल, स्पेशली हम एयर पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कितनी कमी आई है. ये हम किसी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो बॉडी है, जो गवर्नमेंट बॉडी है एनवायरमेंट से रिलेटेड, उनसे भी करवा सकते हैं, हम किसी एनजीओ से भी करवा सकते हैं, या हमारा कॉलेज जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करके और एनर्जी ऑडिट भी करा सकता है, जहां हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन ऑडिट भी करा सकता है. तो ये एक स्पेसिफिक ग्रीन ऑडिट जो है ये मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि जब आप टेम्पलेट देखेंगे नैक का जो एफिलिएटेड कॉलेजेस है उसमें स्पेशली उन्होंने एनर्जी ऑडिट और ग्रीन ऑडिट जो है वो दोनों लिखा हुआ है ना. और वो एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए है. टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इसको इतना हाईलाइट करके टेम्पलेट में नहीं दिखाया था, लेकिन ये भी जरूर उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसको कराया जाना चाहिए. हम भी जब कोई ऑडिट कराते हैं तो उस ऑडिट से हमने जो प्रयास किए हैं या जो एक्सपेंडिचर किया है उसकी ऑथेंटिसिटी जो है या और उसका जो यूजफुलनेस है वो एक बार सबके सामने निकल कर आता है. So that is all about green audit. Any other question? Okay, I think there is no question. So it means that you have delivered a very nice lecture on criteria number 7. Someone has raised hand. Follow me, ma'am. Dr. Jagbinder Kaur and Dr. Follow me. Two people have raised their hands. Please ask your question. Hello. Hello. Yes, ma'am. Hello. Am I audible? Yeah. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. It's a very nice presentation of you. Myself is from West Bengal Sponsored Teachers Training College. I just want to know, for green audit, is there needed any certification from any authorized body? Yes, there is a whole document for that. क्योंकि ऑडिट आपने देखा होगा ना मैम, एकेडमिक ऑडिट भी होता है या जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसका ऑडिट भी किया जाता है. तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ऑडिट सीए लोग करते हैं क्योंकि वो अकाउंट्स के बारे में जानते हैं. तो कोई सर्टिफाइड सीए होता है जिसके साथ हमारे इंस्टीट्यूशन को ने उसको हायर किया होता है या हमारे मैनेजमेंट ने उसको हायर किया होता है ना. इन द सेम वे ग्रीन ऑडिट के लिए भी एनवायरमेंट डिपार्टमेंट जो है उससे रिलेटेड वो एनजीओ भी कोई हो सकता है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कोई हो सकता है. तो उससे जो एनवायरमेंटलिस्ट है या एनवायरमेंट के फील्ड में काम करने वाले लोग हैं उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के, उनसे ही ऑडिट कराया जाएगा. ये ऑडिट हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता. इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एनर्जी डिपार्टमेंट की तरफ से होगा. मैम अगर ये यूनिवर्सिटी का जो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है उससे करवाया जाए तो क्या वो एक्सेप्टेबल होगा? Ma'am, about this I am not very sure because I'll have to see the NAAC guidelines again regarding to it. But I don't think कि ये यूनिवर्सिटी के किसी से आप करा सकते हैं. Whenever it is about auditing, there may be a few members who are the there may be a few faculty members who are the member of the environmental sciences department or the environment committee of the college, but you need to have some external auditor from the environment department, from the pollution board, something like that. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, thank you all. So thanks a lot, madam. Thank you, sir. It was really nice talk on criteria number 7. You have given your best, and I hope all the 250 people, they are really happy with your presentation. So thanks a lot on behalf of Council of Teacher Foundation as well as Azad College of Education, Satara. Sorry from my side for being a bit fast,
but as the valedictory program will be starting now, so I had to restrict to the time. Exactly. Thank you. Thank you. Okay. I welcome Professor Nilima Bhagwati ma'am. Ma'am, good morning. Bhagwati madam, good morning. Muted. Yeah, can you hear me? Can you hear me, please? Yes, ma'am, yes, very clear. Okay, give me just 1 minute time, right? Just give me 1 minute time. Okay, ma'am. So, till that, shall I start introduction, ma'am? Oh, sure. I think, is it delayed? I have to limit my presentation, not presentation, just sort of, interaction. Okay, right. I'm ready now. Okay, shall I start now? Yes. Okay, thank you, ma'am. Just to make aware, today's chief guest for valedictory function, I just want to make aware all the participants that we have in all 988 registered participants. Out of those 988, we can see we have almost 250 participants with us today in this program. Out of these 988 participants, 349 are male participants, while 639 are female participants with us. As far as state-wise distribution is concerned, we have 5 participants from Andhra Pradesh, 9 from Assam, 5 from Bihar, 2 from Chhattisgarh, 10 from Chandigarh, 1 from Dadra and Nagar Haveli, 17 from Delhi, 7 from Gujarat, 47 from Haryana, 9 from Himachal Pradesh, 33 from Jammu and Kashmir, 2 from Jharkhand, 12 from Karnataka, 22 from Kerala, 7 from Madhya Pradesh, 206 from Maharashtra, 1 from Mizoram, 90 from Punjab, 3 from Pondicherry, 126 from Rajasthan, 125 from Tamil Nadu, 9 from Telangana, 1 from Tripura, 102 participants from Uttar Pradesh, 62 participants are from Uttarakhand, 35 from West Bengal, and 49 other people from other streams as well as other faculties they have joined. To our surprise, we have 1 participant from Jordan also. So we are saying that this is national level FDP, but due to this professor from Jordan, it has become international now. So I thank him on behalf of Azad College of Education, Satara and CTEF New Delhi chapter. So as far as today's function is concerned, we are on valedictory and we have with us a teacher trainer and a very good motivational speaker with us, Professor Nilima Bhagwati ma'am. Ma'am is Emeritus Professor, Guwahati University, and she has retired from the same university in 2015. As far as awards are concerned, Madam is National Awardee for Contribution in the Field of Education and Research, Commonwealth Fellow Awardee in 2006, National Best Teacher Award and CTEF Kerala Chapter's Best Emeritus Teacher Educator Award in 2019. As far as paper presentation is concerned, on international level, ma'am has presented 25 papers, at a national level 55, and in different journals, madam has published 32 papers. As far as research is concerned, ma'am has completed 4 major research projects, and she has guided 40 PhD scholars, 40. It's a huge number. So it's a great contribution from ma'am's sides in the field of education. As far as innovative talks are concerned, madam has visited 6 different countries, that is led goodwill mission to 6 countries. Ma'am is director of ASEAN region of Commonwealth Council for Educational Administration and Management. And very proudly we can say that madam is international secretary of CTEF. And so she is with us today to enlighten us on different aspects of education. Similarly, madam is director of Education Support Society Assam, director of Student Wellness Society Assam, chairman of ERC NCTE, associated with NAAC, executive member of Bharatiya Shikshan Mandal, active member of Rashtra Sevika Samiti, executive board member of Indira Gandhi National Center of Arts,
Also, Madam is interested as adolescent and parents counselor, and she has conducted and completed more than 3,500 adolescent learning counseling. So again, once again, ma'am, on behalf of Azad College of Education, Satara, and Council of Teacher Education Foundation, Delhi NCR chapter, I welcome you and request you to enlighten us with your thoughts on education. Over to you, ma'am. Thank you. Thank you very much. You have given a very exhaustive, I don't know how far I'm capable of that. But anyway, I'm happy that the Azad College of Education, Satara, Maharashtra, in association with CTF Delhi and NCR chapter, has organized, because it is already over, has organized this FDP program. The FDP program, which has been organized, it bears immense importance in the professional life of a teacher. As you know, there are lots of training programs which will become sort of mandatory, and some has to be done according to the National Education Policy 2020. It may be pre-service, it may be in-service, but teachers have to be a lifelong learner. That is what is important, and that is what the National Education Policy is always reminding us all these days. So friends, it is a conclusion session, the summing up session. So I will not go deep into the details of NAAC accreditation, etc., because you really, for the last 7 days, you learned a lot, I believe. All the learned resource persons were here, and they must have given you very good mental food regarding what is accreditation, NAAC, etc. But we have to also know about, since as I am associated with National Education Policy 2020 in some of the very important aspects, I'll appraise you about the accreditation as it is expected by National Education Policy 2020. It has already been given in the website. You must have gone through it. But as we had a meeting in the last part of May, that we took some decisions that how we can go far with these in order to assess, accredit the teacher education institutes particularly, and the general education colleges as well. At the very outset, I bow my head. I offer reverence to our founder president, Dr. Gulab Charosia-ji, who patronized the CTE, earlier it was known as CTE, Council for Teacher Education, but later on it has been named as Council for Teacher Education Foundation. Friends, he was the person who mooted the idea of doing something for developing the teachers. Therefore, the motto of CTEF is teachers' welfare is nation's welfare. You must have seen it just below the logo of CTEF. He started with just a handful of very dedicated educationists of the country. I think there was around only 7 to 8 of them. But now it has grown into a huge banyan tree with branches all over the country, even in overseas. And all these 22 chapters, they are very cohesive in the sense, and they're working with the mission and vision, which has been directed by our founder president, Charosia-ji. We are happy just recently, some of the chapters, they have concluded very nicely the birth centenary celebration of our founder president. And also here, we did some in Assam, as well as even the Delhi and the NCR chapter they have done, as well as the other chapters as well, okay? And another person who has contributed a lot, he was our past president, he is Dr. Devraj Vij from Punjab, from Jalandhar. And it was he who actually gave wonderful ideas, some effective ideas, how to bring how to develop a good network of teacher educators in the country. And for that, what we are to do. And with the ideas of these 2 great persons, 2 stalwarts, we are continuing the mission and the vision of CTEF.
So this is just a beginning, and we to speak about CTF because we have expanded the organization in such a way that right now we have 22, 3 overseas, and in the month of September, I'll be leaving for Bhutan, I'll be leaving for Thailand, and also Nepal. Nepal already has a chapter. Bhutan and Thailand, they are very keen to open Indo-Indian CTF chapter in the country. So this shows that the words, the alphabet CTEF, it is spreading around the world, and it is already in the global map. So what is our duty now? We have to take it ahead. We have to take it ahead because we have got the wonderful people of the country with us. We have got the great minds with us. We have great motivators with us. And this is the only duty we have to do, that let us give service to the teaching community, to the students community, so that we can build them as the nation desires, as we all desire. Friends, I think I can't resist sharing these few words with you about CTF. Just recently, CTF Assam organized one youth conclave in collaboration with Guwahati University, the Directorate of Students' Welfare, Guwahati University. And the chief guest of that youth conclave was no other than our very popular, His Excellency, Honorable Governor of Assam, Professor Jagdish Mukhi. He went through the CTF literature, and a very open remark which he gave that made us so motivated, and it has made us so, like honored and blessed us in such a way. He said that CTF for the last 35 years is serving the nation. This was his first opening words. They are the teachers who are in this organization, who are thinking about doing something very constructive, doing something very effective, doing something very innovative for the development of the nation. Because the nation development depends upon teachers. What the teacher teaches, how the teacher guides, how the teacher shows his examples. This all has great reflections in the life of learners. So he said that we need more organizations like CTF to come out and work in different ways for the student community, for the youth community, and for the teachers community. Friends, these were some of the words really, which touched our heart. He collected the informations already, I'm sure, about the CTF, the words, and it is already in our website. So it has given us a great motivation to go ahead with new ideas. Friends, therefore, let us take the mission and vision forward and name this CTF Mission Students, or you can name it Mission Learners. So our mission learners, our mission is the students' mission, if we call it. They are our targets. They are our targets. When we enter the classroom, every one of us should have that feeling in heart and mind that we are getting into the classroom to offer the Havan, the Yagya. For whom we are going to do the Havan or the Yagya? It is for the welfare, the benefit of the students' community. Because they will be the ones who will take the responsibility of holding the reign of the country after a few years. So our accountability lies in the sense that we have to build them, as the National Education Policy says, we have to build them holistically, not only academically, holistically. We are assured that they must be very good learners. We know that they should have very good social behavior. They should be polite. They should be obedient. They should be, maintain a good discipline in the classroom, etc., etc. So many things we teach them, we tell them. But we have to develop the ethics in them. We have to develop the values, the Indian values in them, which is very, very important. You know how the values are eroding nowadays.
You have seen it yourself. So many cases comes out in the TV channels and even in the newspapers. Friends, I'm a teacher, you all are teachers. So this should be a prime duty to mold them, to build them as responsible citizens of the country. If that responsibility comes, automatically everything will come to them. So this is one of our duty that we have to change them. And as a teacher, we have to also become more and more positive for them. It is no point blaming the students. I find sometimes, I feel sad, I feel bad. It's not recently, but some days ago, I don't know, I went for some inspection. That the teacher straight off, when I asked something they couldn't answer, the teacher straight up blamed the students. Then I said, ma'am, this is not the way to blame the students. You are with them. Make them learn something from you, make their knowledge enriched. So our culture, our attitude, our teaching culture, our attitude, the ethics, etc., that we should have to really see that they are abiding by it. Then I don't think so there'll be any point of blaming the students will come anymore. Students should never be blamed. Students, I feel bad. Students should be encouraged. They should be motivated. They are the ones who are looking up to us, up to you, to guide them. So just reflecting Swami Vivekananda's statement, I want to say one thing. Teachers make the greatest mistake when they think they are teaching. You open Vivekananda's philosophy, you will find it over there. Teachers make the greatest mistake when they think they are teaching in the classroom. Why the mistake? Because everything is inside them. The work of the teacher is to bring them out, to flourish them out. This is what Swami Vivekananda said by education. This is what he said by education. We don't have to give them book knowledge. And nowadays the children, they already know before us what is going to be taught in the classroom. They'll check the Google, they'll click the mouse, and the screen will come out. So the learning pattern, the learning aspects have entirely changed nowadays, and we have to take care of them. Friends, another thing I just want to say and share with you, because we know that the book knowledge or the traditional way of teaching the students, that is still going on, I don't think so it has been done away, except by some teachers or by some good schools or education institutes. But generally what happens, the same thing, the same type of question paper, the same type of methodology is being used, which the students don't get, attracted to the teaching. So as a result, we find lots of excuses why they don't attend the school, why they don't come to the schools, or why they're skipping the classes. Friends, therefore, let us see, and from Veda, let us take this lesson that Sha Vidya Vimuktaye. Education is that education which liberates the mind, And this is actually what is reflected in the National Education Policy 2020. Because now you have to go for the explorative learning. You have to go for experiential learning. You have to learn through different ways, interactive classes, etc. You know all this, you have gone through the NEP 2020, So the whole system, right from class 1, say from the foundation to the secondary level, even in the higher education, there is a big resurgence which has been made in the National Education Policy 2020. And we also know that to catch up the ideas of the NEP 2020, we the teachers, we must be trained. We must be well-versed. We must know each and everything what is required in the new education policy.
Just day before yesterday, one teacher from Anganwadi, she came to me because in Karnataka, you already know that it is the first state in the country. They have already sort of applied, or the NEP is already going on. And similarly, from 23, the other states will pick up from the foundation stage. So she asked me, ma'am, they are saying about storytelling. So how to say the story? Then similarly, my answer was that will be taught to you in the training course, but there is a pedagogy which you have to follow while even telling the stories. You have to follow certain methods even while playing, teach them playing. Whatever stories you say, that must have a good message, etc., etc. So for all this, right from the foundation stage to the secondary stage, as I am just dealing with the school education right now, and even higher education, what we have to do, we have to gear up. We have to gear up and make ourselves vibrant teachers. Some of the, I think one of the speaker whose name was there in the, if I'm not mistaken, Dr. Reena, right? Reena, yes, Dr. Reena. She was in one of the workshop which was organized by Assam chapter CTEF on PBL, project-based learning. And that project-based learning, even I was one of the participants, that project-based learning teaches you exactly what and how you can be a teacher in the classroom, how you can be a mentor in the classroom, how you can be the facilitator in the classroom, how you can be a guide and a counselor in the classroom. So you have to be all in one. Just as the mother looks after the entire house, she goes for the cooking, she goes for the washing, she looks after the children, she looks after her hubby also, everything all mixed up, right? So also our duties like that, we have to see all the aspects of our students' life. This is what is very important right now for us. We have to change our attitude that we have to learn more and more. This is what is very necessary for us. Friends, as you know, that the children who are, say, a 2-year-old child, let me give an example. And I have seen a child of 2 years just in my neighbor's house. And I saw him downloading pictures in the mobile of his mom. Another guest came to my house. She took her, that is 4-year-old child, took her mother's mobile and started Googling all the things, you know. How is it possible? And how we are going to face these children? This should be in our mind. So the Teacher Education Institutes has tremendous responsibility how they are going to face, how they are going to develop, and how to make them learn. You don't have to teach them what to learn. You don't have to teach them. Even that NEP says you don't have to teach what you have to learn, but you have to show them how to learn. So all these things makes us and gives a very clear picture that the entire educational institutions, including the higher education, school education, and even the teacher education, that must go through a vigorous, a robust resurgence. A resurgence is necessary. And for that, we have to gear up, because by 2030, we are getting the time, the limit up to 2030. Only by the time we have to prepare ourselves. Before coming to NCT, though I was associated right from 97 with NCT, I not ignored actually, I did not look to some of the areas, but while coming to the NCTE and having very frequent meetings and discussions in NCT office, Dwarka, Delhi, I've come to know that with the teachers, particularly those in the teacher education institutes, a very challenging time is coming. A very challenging time is coming. Why? Because the classroom situation will be different, and these teachers will take what you teach to their respective schools. So therefore, how the teacher educator
deals the teacher students, how the teacher educator mingles with them, how she shows the classroom behavior, how she enriches with extra knowledge, etc., etc. There are lots more. They must be totally trained in all these aspects. In the pedagogy, that is very important. They must be totally trained. So we are having, I won't say challenging. I am not demotivating you, not challenging. These are some of the we have done, but we have to now polish them. We have to polish them. We have to polish it. Take the best practices from the excellent teacher education. There is no hesitation in it. There is no hesitation to take the best examples from others. This project I am taking in Assam, I just talked with the executive committee last evening, that make some teachers from teacher education institutes visit the colleges in the northeastern region. Maybe it is in Manipur, maybe it is in Meghalaya, to visit the best schools and adopt the best practices. They should see. So learning experiences they should have. So in this way, we have enough opportunities, we have enough prospects in front of us. We have to go ahead, my friends. This is what we must be aware of. And in one of the meeting with Niti Ayub, the deputy chairman, he said, the nation has given you all the best education policy. In fact, after 185 years, I'm not saying 35 years, that is right after Macaulay's time. But it is the teachers who will apply it in the situation, in the real situation. It is they who should be equipped with all the knowledge of how to change that existing culture, how to change that existing education system and introduce what is most effective, what is more impactful for them. Make the learning experiences more enriching. This is what is said. Obviously, it again reminds, as I told you in the beginning, that it is we who have to think how to bring and make the changes possible. Friends, one of the things I would just like to say regarding teacher education, like some of the teachers have hesitations, like what will happen or what will be the situation. I don't know why they're having so many worries or so many anxieties in them. But one thing is sure, by 2030, gradually, you have to get into the ITEP, Integrated Teacher Education Program. And most of the things has already been in progress, is going on for that ITEP. And that will be a big challenge for the first, maybe for the first 2 years, how to overcome certain things, but gradually it will be like as we're doing the BEd 2 years courses, etc., it will be a regular form. So you have to, at every step of your professional life, you have to see what I should do, what I should go for, what is my weakness, and how to remove that weakness and make that strong, right? And with that, again, another situation come. As you know, you talked about NAAC. I do not want to go NAAC. I was once upon a time. Now I am not going for any sort of inspection because due to all these schedules and all. One thing is sure, we followed 7 criteria, right? I think, and some of the changes has already been made. But in the NEP, as you know, the regulatory system has already, I don't want to speak on that. That will be very lengthy. But for accreditation purposes, as it is said in the NEP, there will be very important 4 meters will be really looked into. One of them is the public self-disclosure. It will be in the web. Everything should be transparent. Everything should be transparent. Not like in the beginning of NAAC, how do we went, etc., etc. No, all things will be uploaded in the
website, it will be transparent, it will be known to all, it will be seen by all. So while going for any assessment and for any accreditation purpose, this will be very much visible. And secondly, in this website, which public subject, even the students who feel that they want some change or they are not satisfied, it is there. They can also write few words. The second important point, which we always talk about, is the good governance. The good governance has very great impact in an institution. So good governance, how it will be possible to, sort of have a very good governance, good management will be there, governance will be there, okay, etc., etc. That part will be looked when the teacher education institutes and the other institutions will be assessed and accredited by National Assessment Council. Another one is the outcome. Outcome is what? The learning outcome, the learning outcome. The other extension services outcome, the community outcome, all this has been clubbed. And this is very important, that outcome plays a bigger role, a very important role in assessment and also in accreditation of an institution. And somebody has to supervise, somebody has to monitor all what is going on from time to time. And that responsibility, that accountability has been given to NAAC, National Assessment Council. So we find that these changes are coming. They are just waiting to be implemented. So before it is being implemented, we have to gear up all our institutions. We have to see. I just heard about that green audit. Yes, all these are, when you go through, all these are in the, parameters are there. Just till last year, after pandemic, yes, before pandemic, not after, before pandemic, lots of universities came to know in Assam, in reference to Assam, I'm saying, I got a number of, formal letters to go and help them in academic and administrative audit. That time the green audit was not there. So what happened? They became very panicked that it has been made a sort of, not mandatory, but a university or a higher education institute must be audited, both academically and also in the administration side. But what I feel as a teacher, this should be our duty also to do it. The management will come from outside, external. They will come from the auditors, will come from outside, and they will do, and will come to know what is lacking. And that will help us to prepare in the best way possible to change if some lacunas are there, and to gear ourselves. Friends, so these are some of the thoughts which just got reflected in my mind. I am telling you. So for that, we have to do. And you also know about that professional standard setting bodies that has already come. I don't think so I have to tell you all about it. And NCT, with the help of SCRT in the states and NCRT, the NCT will be sort of get into this professional standard setting for the teachers. Therefore, I feel that these are some of the ways how we can gear ourselves for the changes that are coming, how we can prepare ourselves to changes coming. It is not only me, but everyone would like to see that if a teacher gives the knowledge, this was what I have seen in one of the college on inspection. It was a long time back, of course, it was in 2018, that on the table of the teacher, there was a book on education, principles of education, written by Professor B.C. Kaur. B.C. Kaur, sir, was my teacher. I did my post-graduation from the Guwahati University in the year 1973. I came out, and that book was written in 1978, and that book has been used. How can you think that the students will, from where they will gather the recent knowledge, the recent research, etc., etc.?
So all these, lots of things come out. When you just, sort of go on exercising your mind, lots of thoughts will come out. Why we need this, or why you want to discard this, or why this is important for us. Friends, so this is how you can change the entire scenario of general education, teacher education in the country. And this is very important, the need of the hour to change our mindset from being good, let us come to better than to the best, as Dr. B.K. Pasi said in his book. Good, better, best. We should be the best teachers. So nobody can point fingers at us that C is not doing her duty in this college or in the school. So this is how and what we want. And as a teacher who taught for last 44 years in higher education, I have learned one thing in my life which I want to share with you. If you follow just 4 Ds in your life, you will be a successful teacher in life. One is you have to be very disciplined teacher. You have to maintain the discipline. The second one is the dedication. The third one is the devotion. And fourth is what? The 4 D is very important. Can anybody say? Fourth is very important. Being teachers, I think you know it already. You can unmute and say, I said about discipline, dedication, devotion, and the other D. You're doing it. Can anybody say? Can anybody say what is another D, which is very much you are experiencing in life? No? Yes, somebody wants to say, but please say, I'll help you. I'll help you. I said devotion. I said dedication, devotion, discipline. And another D? I can't hear. I can't hear. Or you write in the chat box. Write in the chat box, please. Another D. Hard work. Yes, we need hard work. But the D is not that this is, yes. Who has given this? Determination. Determination is the right word. Thank you. Who has given this? Dr. T. Hemlatha. Who are you? I want to see your face. So quickly you have given this. Just show your face once. You unmute if you are there. It's exactly the determination. We should be determined. We are teachers. Our determination is very important. So you just keep these 4 Ds in your mind and in your heart. We don't know where our mind exists, but I have just pointed out here. You keep it in our mind and in our heart, and you will see that nothing is impossible. You can come and directly you can wipe off the I am and can make possible to be the best teacher, to be the most soft of the teacher, to be the most enlightened teacher, and to be the teacher who the others will directly take the best practices. I think I will not go very far because I have to go somewhere. I want to conclude, but I just want to say a little bit about CTF. As you know, and in the Northeastern region also we have chapters. Lots of things are going on. We have a website. Please visit the website, ctefglobal.in. That is our website. You can see what the states are doing, though some of the states are only there. And the second most important thing is that very soon we are going to have one international journal, international multidisciplinary journal. And only now, right now, the ISSN process is going on. It will be ready by next month. I do want you to write your innovative thoughts, your research-oriented works, all that you have in mind to make education a new way, which we can which we can give to the students, or which can make
or bring a complete resurgence in the country. So that will be updated in our website regarding the journal, and already the Delhi chapter and the NCR, they are aware of it. And those who are from the NCR and the Delhi chapter and from the other states, please just visit the website and also try to contribute good papers. And that will be a very good contribution to you, to the rest of the teaching community. I thank the organizers of practically the college, the Judd College, and the very vibrant Delhi NCR chapter. They are doing lots of work. I never thought that NCR will do so much of work within a short time. I was surprised. Really, telling me. I took some time to bring up this Assam chapter, but NCR fatafat kar diya, dikha diya, jo kya hai. So this is indeed very good. All the chapters like Uttarakhand chapter, the Punjab chapter, they are doing immense work on teacher community, and they are continuing their work. So be a part of the CTF, and being a part of CTF, you will see that you are gaining not only the knowledge, but you are getting and gaining the motivation and the urge to work for the nation by doing something for the teachers. I think I can end up over here. It is already time. I have to leave also. It's already time. And I wish each and every participant a big number. Just as I joined, I heard the announcement of the different participants coming from the different states, and also from overseas one has joined. So you can obviously name it international FDP, not national FDP when there is one international participant. And that is excellent, excellent job. And you please go on doing the FDP for the others also. And also particularly do some orientation courses or sort of subject-oriented courses for the school education teachers, because they also need, these are very need-based courses for the school teachers. This is something very important, which I'm just reminding you. And I think with this, we can definitely bring resurgence in the education sector. I thank you all. I thank you all, and I bless you all. All are obviously younger to me. I am the senior-most person in age over here, and my blessings will be always on you. Please don't hesitate to ask any sort of suggestions from me. They know my phone number, any participant. If you have any problem, if you want to know something, either of teacher education or of the NEP, don't ask me other than these two, either of the NEP, because this is what I am right now engaged with, and the works which are, and yes, I forgot one thing to tell you. If for the school education, the teachers, it's a good news that they will become the first level teacher counselors. And for that, because guidance and counseling for the first time has entered into the school education, with so many problems cropping up in the education system and being in the adolescent stage, the secondary stage and all. So lots of works have been going on. I'm handling that part. And what I want to say, that will give you another area of exploration, guidance and counseling to deal with your students. With these words, I thank you and wishing you a very successful ending. I think the certificate distribution is still there and somebody will speak, but I excuse myself and I'll be happy if I can leave the valedictory session now. Hope I'll be permitted. Thank you, ma'am. If Dr. Sanjay and the principal of the Ajad College permits me, then I can leave. Or otherwise I have to sit. Yes, ma'am, definitely. Thank you, ma'am. Thank you. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. Be safe, stay healthy, and do hard work. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot, ma'am. This is really a fruitful session by Professor Nilima Bhagwati ma'am, who is
International Secretary General Council for Teacher Education Foundation. Ma'am has motivated all of us, and the speech was really informative, including 4 Ds, which are really going to help us as a teacher as well as okay. Sorry for disturbance, some technical problem was there. Now it is solved. Now may I request Dr. Sanjay Kumar, Secretary General of CTEF Delhi NCR Chapter and Principal of Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad. Over to you, Dr. Sanjay Kumar, sir. Thank you, Vinay sir. प्रोफेसर नीलिमा भगवती मैम को सुनना हमेशा इंस्पायरिंग रहता है, आज भी वैसा ही रहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं स्पेसिफिकली जो पॉलिसीज से रिलेटेड है, तो वो रिपोर्ट हम प्रोफेसर नीलिमा भगवती मैम को जरूर भेजते हैं, क्योंकि वो काफी सारी नेशनल लेवल पे जो कमेटीज हैं जहाँ पर पॉलिसी बनती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो डेफिनेटली जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं तो उनको वो कहीं ना कहीं रखती होंगी। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा क्योंकि टाइम काफी हो गया, लोगों के मैसेज से ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा सुनना नहीं चाहते। अब एफडीपी काफी सक्सेसफुल रहा सर आपका, और सबसे ज्यादा जो बधाई के पात्र हैं आप ही हैं, क्योंकि फीडबैक को मैंने चेक किया जो आप रेगुलरली मुझे भेज रहे थे, काफी लोगों के फोन कॉल्स मेरे पास आए और बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका। इंटरेक्शंस, मेरा अपना ये मानना है कि अगर अंडरस्टैंडिंग किसी भी कॉन्सेप्ट की लोगों को हो रही है तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इंटरेक्शंस भी डेफिनेटली इंक्रीज होते हैं। तो ये तीनों बातें ये साबित करती है कि एफडीपी वाज वेरी सक्सेसफुल। मैंने कोशिश की इस एफडीपी में, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा मुझे पसंद भी है, मेरे करीब भी है, मतलब मैं थोड़ा स्टडी करता रहता हूँ उस पर। कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे नजर आए कि इस पर हमें एक रिपोर्ट भेजनी चाहिए, ऊपर हम नेशनल लेवल पे भी भेजेंगे। एक तो रिसर्च पब्लिकेशंस को लेके जो ओनली यूजीसी केयर है, इसमें डेफिनेटली यूजीसी केयर में हम सभी को काम करना चाहिए। और जुलाई के एंड तक मैं समझता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम दिल्ली एनसीआर चैप्टर की तरफ से आ जाएगा जो कहीं ना कहीं फैकल्टी मेंबर्स को असिस्ट कर रहा होगा वो यूजीसी केयर के लिए। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि इसमें पीयर्ड रिव्यू भी इंक्लूड हो, चाहे उसका वेटेज कम हो, उसकी मार्किंग कम हो, लेकिन वो काउंट हो कम से कम, क्योंकि यूजीसी के बाकी चीजों में शामिल है और यहाँ पर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन सा दिखाता है चीजों का। दूसरा था रिसर्च प्रोजेक्ट्स को लेके, तो रिसर्च प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स कम है और वो काफी हद तक देखा जाए तो सेलेक्टिव से है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, काफी हद तक देखा जाए तो उस पे काम करने की जरूरत है जो मुझे नजर आती है। इसके बाद तीसरी एक चीज मैं देख रहा था कि अगर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस स्टैंड एलोन कॉलेज ना होकर एज ए एफिलिएटेड कॉलेज अगर अदर कोर्सेज भी उसमें हैं, तो जो उसका 2.4 वाला सेक्शन है जिसमें कॉम्पिटेंसी और स्किल डेवलपमेंट है, 100 का वेटेज है जिसका, वो टोटली खत्म हो जाता है, फिर वो रहता ही नहीं है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन शो करता है, या तो दोनों में हो या दोनों में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप स्टैंड अलोन है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एफिलिएटेड में है तो नहीं करेंगे। तो वहां पर कहीं ना कहीं एक अटेंशन की रिक्वायरमेंट है कि हम कुछ गवर्नमेंट को दें जिससे वो इस पर ध्यान दें, स्पेसिफिकली नेक को लेके। और एक जो ऑप्शन है वो मिसिंग है स्पेसिफिकली टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस का जो ऑप्शनल वाला पार्ट है, अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में जाएंगे तो 30%, 3% या 30 मार्क्स का जो वेटेज है मैक्सिमम, वो डिफरेंट मैट्रिसेस में खाली क्राइटेरिया 1, 2 और 7 को छोड़ के मिल जाता है। और उसमें वो ये कहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर रहे हैं एक्रेडिटेशन में। अगर इंस्टीट्यूशन ऐसा महसूस करता है कि ये वाली चीजें उसको सूट नहीं करती, मान लीजिए ग्रेजुएशन है कॉलेज में, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, तो रिसर्च वाला कुछ पार्ट अवॉइड किया जा सकता है, तो वहां पर पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग टीचर एजुकेशन वाले मैनुअल में कहीं ना कहीं मिसिंग है ये वाला पार्ट। एफिलिएटेड कॉलेज में है, अगर आपके पास बीएड प्लस बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन कोर्सेज है तो आपको 3% या 30 मार्क्स का जो वेटेज है उसको कहीं ना कहीं एग्जम्पशन है, लेकिन आपका
इंडिविजुअली स्टैंड अलोन में जाते हैं तो नहीं है उसमें मैनुअल में, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पॉलिसी लेवल पे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। बाकी मैं अपने रिसोर्स पर्सन्स को, जितने भी रिसोर्स पर्सन्स थे, सबको थैंक्स कहना चाहूंगा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस एफडीपी को कैरी किया, और स्पेसिफिकली आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन को और डॉक्टर विनय डोंगरे जी से मेरी एक इंटरेक्शन कंटिन्यूसली रहा इस प्रोग्राम में, और बहुत अच्छा लगा मुझे उनके साथ इंटरेक्शन करके। इवन डिजिटल इंटरेक्शन हमारा ज्यादा था, फोन पर हमारी शायद इतनी बातें नहीं हुई जितनी लंबी ये एफडीपी हो गई हमारी, लेकिन हम लोगों ने डिजिटल इंटरेक्शन से ही बड़े आसानी से सारी चीजें कर ली, और सर का बहुत अच्छा साथ रहा। जितने भी हमने, ये हमारी 5th एफडीपी है लास्ट 3 मंथ्स में, एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, सर का बिहेवियर, सर का एक प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसके अलावा डॉक्टर अमित कुमार, प्रिंसिपल मैम डॉक्टर वंदना नलवड़े, इन लोगों की वर्किंग का पता इसी से चलता है कि एक ग्रेड कॉलेज है। मैं हैरान था जब कल देख रहा था कि अभी एफडीपी का एंड भी नहीं हुआ और रिसोर्स पर्संस को थैंक्स लेटर पहुंच भी गए उनकी तरफ से। मतलब ये जो वर्किंग की स्टाइल थी ना, जो होनी चाहिए, जितना कमिटमेंट है आपका चीजों को लेकर, और आप सीरियस थे, एक्सीलेंट सर। मतलब मेरी तरफ से बिग थैंक्स टू कंप्लीट टीम। और सीटीएफ की तरफ से मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा सभी रिसोर्स पर्संस को, और स्पेशल थैंक्स चेयरपर्सन प्रोफेसर सत्येंद्र गुप्ता जी और जॉइंट सेक्रेटरी प्रोफेसर तानिया गुप्ता मैम, क्योंकि वो लोग आपको फ्रंट पर नजर नहीं आएंगे कहीं भी। जो एक चैन सिस्टम है वो मेरा रहता है बीच में, मैं कॉलेज से भी इंटरेक्शन कर रहा हूँ, बाकी टीम से भी, लेकिन बैक एंड पर आइडियाज हैं, काफी वर्क है, वो अच्छा खासा कर रहे होते हैं। और अभी रिसेंटली हमने एक चीज शुरू की, क्वालिटी सर्किल। क्वालिटी सर्किल का जो आइडिया दिल्ली एनसीआर चैप्टर ने स्टार्ट किया, उसमें ऑलमोस्ट या तो कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स हैं या जो नेक्स्ट रिलेटेड रिसोर्स पर्संस थे। मंथली वो एक मीटिंग करेंगे या प्रोग्राम करेंगे जिसमें उनके लेवल पे, यानी कि रिसोर्स लेवल के पर्सन लेवल पे जो क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, वो आपस में क्लियर होंगे उनके, जिससे कि आगे के प्रोग्राम्स को और ज्यादा बेहतरीन तरीके से बनाया जा सके। तो इसी के साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा वंस अगेन आजाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन को इतने अच्छे वंडरफुल एफडीपी के लिए। थैंक यू सर। Thanks a lot, sir. It was your support and kind words which really motivated we as team of Azad to conduct this FDP very effectively. So it's all your efforts from team of CTEF. So I'm thankful to you, and I request our principal, Honorable Dr. V.S. Nalwade Madam, to address the participants. Over to you, ma'am. Thank you. Good afternoon and welcome to all. Honorable Professor Nilima Bhagwati ji, International Secretary General, CTEF. Honorable dignitaries of CTEF Delhi NCR chapter, resource persons, FDP coordinator, participants from various states and countries, we can say now, faculty from Azad College, technical staff. It has been a great movement for Azad College of Education, Satara, Maharashtra, to organize the 8 days national FDP on NAAC accreditation for teacher education institutions. And it is on the way to completion today. In those 8 days, we hope all of us have gained a lot of knowledge about each criteria given by NAAC. I appreciate the cooperation and sincere efforts by Professor Dr. Bhandarkar, Professor Satyendra Gupta, and especially Dr. Sanjay Kumarji for CTEF Delhi NCR chapter, and Dr. Vinay Dhonge, FDP coordinator, for his sincere and painstaking efforts. I also thank our IQAC coordinator, Dr. Amit Gagre, for successful completion of this FDP. Let me appreciate and thank our 8 resource persons for their fruitful guidance about 7 criteria. Honorable Professor Dr. Tania Gupta, Professor Dr. Satyendra Gupta, Professor Dr. Sanjay Kumar, Dr. Babita Bhardwaj, Dr. Ajay Surana, Dr. Anita Singh, Dr. Sangeeta Solanki, Dr. Reena Tiwari ji, and especially today's chief guest, respected Nilima Bhagwati ji. Thank you all.
I feel very proud due to our faculty development program coordinator, Professor Dr. Vinay Dhunge, IQC coordinator, Dr. Amit Gagre, and all faculty members, technician, and all CTF members also. I appreciate patient listening and active participation of all the participants. Honorable Sanjay Kumarji sir, we have noted all your instructions which you have given in your speech. I would like to thank and request all dignitaries from CTF Delhi NCR chapter and request to provide us an opportunity to organize such a distinct programs again. So I am very thankful to all of you and especially Sanjay Kumarji sir. So thank you very much. So thank you, sir. Good afternoon, all. Thank you for your patient listening. Today, I'm going to take more 5 to 10 minutes to give some instructions about certificates and all. Before that, I would like to thank each and everyone who has contributed to this FDP. First of all, I would like to thank today's chief guest, Professor Nilima Bhagwati ma'am, for her quick and positive response to guide us in this valedictory function of FDP program. Madam, your presence and wise words help magnify our cause in the best possible way. Thank you once again. Now I will go back to day one. We had Dr. K.M. Bhandarkar sir for inauguration. Sir guided us how quality can be improved and helps in all aspects of education. Thank you once again, sir. This inauguration session was followed by first session of Criterion 1 by Professor Dr. Tania Gupta, Dean, School of Education, K.R. Mangalam University, Gurugram, NCR. She enlightened us about all aspects of Criterion 1 and clarified all the queries of the participants. Day 2, for the sake of adjustment at 11th hour, just because not to disturb the schedule, Principal Dr. Sanjay Kumarji very positively conducted the session on Criterion 3, that is research and extension activities. All the participants were fully satisfied by the presentation. Thanks a lot, sir. Day 3 was engaged by Professor Satyen Gupta, Dean, School of Education. His resourceful lecture on Criterion 2 satisfied all the participants. Thanks a lot, sir. Day 4 was given for Criterion 4, that is infrastructure and learning resources, and was given justice by Honorable Dr. Babita Bharadwaj ma'am. Thanks a lot, ma'am. Next day, Dr. Ajay Surana, Head Department of Education, Vanasthali Vidyapith, focused on Criterion number 2, mostly on evaluation. Thank you, sir, for your nice presentation. Day 6 was engaged by Dr. Anita Singh, Director, Saraswati College of Professional Studies, Ghaziabad. She very elaborately explained Criterion 5, that is student support and progression. Thank you, ma'am, on behalf of both the institutions. On day 7, Dr. Sangeeta Solanki, IQAC Coordinator, IPEM, Group of Institutes at Ghaziabad, spoke on Criterion 6, Governance, Leadership and Management. The lecture was quite informative. Thank you, ma'am. And today, as you have already attended the session conducted by Dr. Rina Tiwari, Associate Professor, Department of Teacher Education, DAV PG College, Dehradun, threw light on Criterion 7, institutional values and best practices. Thanks a lot, ma'am. Now I must thank from the bottom of my heart to Dr. Sanjay Kumar, Secretary General, CTEF Delhi NCR chapter, who really motivated me to conduct this FDP very effectively. Anytime I would ask him any problem, and he has provided help and guidance within no time. Thanks a lot, sir. We really communicated in such a way that as though we were knowing each other for years together. I will like to work with you in future too. Thanks a lot, Sirji, you and your whole team of Delhi NCR chapter. At the same time, I would like to mention name of Principal Srimati Smita Thakre. She is principal in Shantiniketan International School. She has conducted one week online national level teacher development program from 10th June to 16th June in association with Delhi CTR chapter. She very neatly conducted the program in association with Delhi chapter, and it was motivation for me. Thanks a lot, ma'am, for your kind help
in each and every aspect. It is indeed my duty to thank my principal, Honorable Dr. V.S. Nalaude ma'am, who always stands behind any innovative proposal by any of the faculty members and all support whatever is required. Thanks a lot, ma'am. My young colleague and IQAC as well as NAAC coordinator, Dr. Amit Kumar Gagre, without whose help this FDP was not possible. He was standing by me all 8 days with his full support. Thanks a lot, Amit. At the same time, I am proud of all my senior colleagues, Dr. Mrs. Sikalgar ma'am, Professor Dr. N.D. Dhanavade sir, Dr. J.S. Kamble sir, Dr. A.B. Patil, Dr. K.R. Morris, and 2 young ladies from my staff going to be doctors within few months, Mrs. Nutan Nangre Shinde and Mrs. Shobha Pawar Patil. All my colleagues helped to conduct this program smoothly, though it was vacation for we people. Now vacation from 1st July to 31st July is going on in our university. And of course, my young staff member, Mr. Kunal More, who is very active in preparing all schedules, attractive flyers, which you have seen, as well as the certificate, which you are going to get by today evening. And the technical support was provided by him through his painstaking efforts. You could see recorded videos on time on YouTube due to his efforts only. And last but not the least, all you participants without whom this total program was not possible. That is, out of total 28 states in India, participants from 26 states are present in this FDP. In all, 988 participants were present for this FDP. You people really made this FDP a great success. Thank you, all of you, once again. Thanks a lot, sir. Some instructions. By today or tomorrow evening, you will get your certificates. The content, that is the name and name of your name and your name's institute's name will appear as it is provided by you in the form in the beginning. So a kind request to all the participants that don't request to change name or institute's name, because huge number of participants are there and we have taken efforts to prepare each and individual certificate properly as per given information. So that particular thing will not be entertained. And if some problems are there, or if few of you won't get any certificate, please, FDP group is there, WhatsApp numbers are there. So you can contact me on that particular WhatsApp group so that I can solve your problems. So once again, on behalf of Azad College of Education, Satara, and Council of Teacher Education Foundation, Delhi NCR chapter, I thank you all. Thanks a lot. Thank you. निकाली